present over here from different domains. I welcome the Elite panel, which includes the speakers for our today's session. They are present on the panel. And I also welcome all the participants who have been with us together throughout our journey of Ashwa Legal. So let me introduce to you our firm. We are Ashwa Legal Advisors LLP, founded in the year 2017 by our founder and partner, Shri Advocate Chartered Accountant Dr. Avinash Podar and Srimati Advocate Chartered Accountant Anchal Podarji. Other partners of this firm being Shri Shalin Doshi ji, Shri CA Ashu Dalmia ji, Ma'am CA Shefali Girdharwal ji, myself CA Vishal Podar, Shri Advocate CA IP Pramod Dokania ji, Shri Advocate CA Amish Gandhi ji, Shri Advocate CA Avdesh Sharma ji. To introduce our firm, we are a national level boutique law firm. We provide legal assistance and litigation support in different areas, which includes taxation, both direct taxes and indirect taxes, that is erstwhile service tax, excise matters, and the present customs and the GST matters. Besides this, we specialize also in PMLA related issues, Benami, and other corporate laws, which includes Companies Act, IBC, SARFAESI, and also other statutes, litigation, and legal services that are required in a corporate. Plus, we have a network which includes partners, and most important, we have a specific associate policy whereby different professionals from across India are part of our Ashwa Legal network, whereby we provide a hand-holding, and it is a mutual exercise by which both of us benefit equally. Whoever is interested and keen in getting part of the Ashwa Legal Network Associate may please connect to any one of our partners. Presently, we have our offices at Surat, which is our head office. Then the key branch offices are situated in Fort Mumbai, Delhi, in different parts of Delhi NCR, Pune, Ahmedabad, Nashik, Vadodara, Faridabad, Gurgaon, Rajkot, and all associate offices which are spread across India. So with this brief introduction of our firm, let me immediately go to our today's deliberation. So as you all know, and as you all have been eagerly waiting for this decoding of the budget 2025, we had the Finance Bill 2025 being tabled in the Lok Sabha on the 1st of February. And to decode the various aspects of this Finance Bill, we have the most learned Shri Dr. Advocate Kapil Goyal ji. We also have our senior partner, Shri Dr. Chartered Accountant Advocate Avinash Podar ji, and also our senior partner, Shri CA Ashu Dalmia ji. Shri Kapil ji would be taking us in the deep dive of the direct tax related amendments. Ashu Dalmia ji would be handling the indirect tax law related amendments, and Avinash ji would be taking you with the varied questions that may come up relating to these amendments. Now, firstly, we start with the direct tax section, in which I would like to first introduce our esteemed speaker and a very learned person for the day, Shri Kapil Goyal ji. Shri Kapil Goyal ji is a practicing lawyer at Supreme Court, various high courts, and tax tribunals. Shri Kapil Goyal ji is a commerce graduate and a qualified chartered accountant and a fellow member of ICI. He is specialized lawyer in the direct tax litigation segment. He has argued some landmark cases at various high courts on wide-ranging issues, which includes reassessment and search assessments as well. Till date, more than 2,000 of his cases he has represented at various judicial forums, including the high courts and the ITATs, and also more than 2,000 seminars across have been addressed by him, and more than 200 webinars he has conducted on various forums, including our Ashwa Legal and also the ICI. Shri Kapil Goyal ji has a special interest in constitution related studies and a very keen interest
in linking the constitution with our day-to-day practice relating to our profession and also relating to the representation practices by professionals like chartered accountants, advocates before the various tax and other authorities. Shri Goyalji has authored various papers on various direct tax and constitutional interplay issues, which is widely circulated amongst tax professionals. And to keep it short, but just the last and most important line, Shri Kapil Goyalji takes keen interest and active interest in spreading and sharing the updated knowledge on latest jurisprudence on direct taxes. And we all love to hear you. And Kapilji, thank you very much for honoring our request and being present. So over to you, sir, for the direct tax. Vishal ji, just sorry, Kapil ji se start kare uske pehle let me just say one thing. Avinash bhai, Kapil ji is such a great and dear friend कि आज he is not well. His throat is also not working, and since last, जैसे हमको पता होता है कि ये बजट आने के बाद डायरेक्ट टैक्सेस पे जितने लोग बोलते हैं उनमें से सबसे ज्यादा बोलने वालों में से एक कपिल जी हैं. तो यार ही इज ट्रैवलिंग आल्सो, देन हाई कोर्ट का प्रेशर, दूसरे कोर्ट्स का प्रेशर, इनके साथ में भी ही इज सो काइंड कि मैंने एक बार रिक्वेस्ट किया, जो स्लॉट उनके पास अवेलेबल था इमीडिएटली ही सेड यस. सो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू कपिल भाई for coming online and now enlightening our participants, क्योंकि बहुत वो eagerly wait कर रहे हैं आपके लिए सर. नहीं सर, please come in sir. Deeply blessed and privileged and honored Avinash bhai and Vishal bhai and I would request you मतलब keep your video Avinash bhai open and Vishal bhai if can also. So I was just submitting Avinash ji that it is my fortune that I am joining this legal brigade of you, and you are brigadier of this team, as we all see in you, a great man, a great legal person. I'm always your younger brother. That's a matter, and that is the purpose to be in your learned erudite company. That is my purpose to be here. And as I was submitting, I'm slightly, spiritual also, as you are in that part of the world where our Dwarkadhish is very near. So somebody says न्यायाधीश गलत हो सकते हैं पर द्वारकाधीश गलत नहीं हो सकते. And I would start my discussion with one very powerful mantra of Bhagwan Krishna, where he says in Sanskrit, Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranat Kalesh Nashaya Govindaya Namo Namaha. This Padarji mantra is stated to be a very powerful mantra to kill all evils and to get the blessing of Lord Krishna. And secondly, on a love and affection note, I just write some lines last day night only. Radhika Kishori Sang Raman Tihara. Raman means the Prabhu company with the Radha Rani. मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छिपा के तुझे नैनों में. In my eyes and in my heart, even if I die, but if I see that great visual of Lord Krishna with Radha Rani, that is my ardent wish. Anyhow, with these words, I would like to start my discussion, because sometimes, and Ashu Bhai is also there, then he can also be, I really regard him as a very learned man. Because now our topics are, our subjects are such, Avinash bhai, tax jurisprudence, which flows in overlapping zones. And so it is always very welcome suggestions and inputs and some points which supplement you can make and Ashu Dalmia ji can make. I will be very happy and pleased to take on the board. So this finance bill, Avinash bhai, 2025, as far as our subject income tax is concerned, I would like to just highlight few paragraphs of the budget speech of the Honorable Finance Minister, which holds a really different important aspect. Paragraph 94 of the budget speech, which states, I would just read out 5-6 lines. Avinash bhai, it is very interesting. Para 94. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as 1, faceless assessment, 2nd, taxpayer charter, 3rd, faster returns, 4th, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivas Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first and scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. So there are 3 parts, Avinash bhai, of this paragraph which are very important, Vishalji.
First part is this that the Honorable Finance Minister says कि last 10 years in last 10 years, what reforms they have done, they have kept in 5 brackets. And first is faceless assessment. And Avinash Bhai is rightly laughing. When you see this, they say, see, can I speak in Hindi also in between, sir? Yes, sir. Please, sir. You may keep it mixed. तो फेसलेस असेसमेंट वैसे तो अच्छा, हमेशा ही अच्छा है, हमारे को सबको अच्छा लगता है, बट एक चीज इसमें जैसे क्या बड़ी इंटरेस्टिंग है अविनाश जी, बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग कि दैट सो मेनी हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, यू नो, इंक्लूडिंग गुजरात हाई कोर्ट, आशु भाई, हैज गिवन इन लास्ट वेरियस ईयर्स कि साहब आपके फेसलेस असेसमेंट में सबसे ज्यादा इन द प्रॉब्लम विच इज फाइंड इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन जुडिशनल ऑफिसर जाओ एंड फाओ. Jao does not know what FAO is doing, Vishalji, and FAO does not know what Jao is doing. And secondly, when we communicate through FAO in the submissions being put on portal, and portal is the only channel to communicate, there are various number of multiple instances where our submissions, where our arguments are kept at bay and template orders are being passed. I would have really wished that since we are going into a very different kind of thinking now, as it is said that we are having most tax friendly regime now, so faceless assessment should have been rationalized to that extent. At least as far as principle of natural justice is concerned, what is the big deal in that? That if you are giving show cause notice, if you have to give oral virtual hearing, if you have to give relied upon material, if you have to give Dalmia ji the reasonable opportunity of being heard, minimum time gap between show cause and final order, and the quality of show cause notices, the quality of the adjudication orders, the quality of the video conference hearing. And Avinash Bhai, Gujarat High Court has been one of the front high courts where the maximum faceless assessment in writ petitions have been quashed on the ground that quality of video conference is not proper. All these inputs, Vishalji, should have been factored into this, should out to have been. It is my humble submission, because when you say it's a reform, then this reform cannot be the reform unless you keep all the good things into the consideration. सो फेसलेस असेसमेंट में आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड, पर उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने, इतने सारे हाईकोर्ट के जजेस ने कंट्री में बोला है, उसको भी देखना चाहिए था सर, जिसमें स्पेशल पॉइंट कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट बिटवीन जाओ एंड फाओ, बिकॉज नाउ व्हाट इज हैपनिंग पोद्दार जी, various activities in income tax regime are done by JAO and some activities Dalmia ji are done by FAO, and there is serious lack of coordination between the two wings. And it is like this, some part is done by JAO and some part is done by FAO, and assessing office assessee is really going like a kabhi idhar kabhi udhar, like a in a tennis ball, right? Like this tennis ball, table tennis ball, like that is going on. And secondly, natural justice is something which I really find a very casualty in various high court, and I say with respect and humility at my command that natural justice has been really a matter of great concern in the faceless assessments, and various high courts have opined that it should be rationalized, but it is not done, sir. They believe it is reform. Okay. Second thing is taxpayer charter, Avinash Bhai. Now you see, many people, Dalmia ji does not even, I was speaking last day in Delhi in a program where I just asked Vishal ji, how many people in the chartered accountants know there is a document known as taxpayer charter officially and formally already notified under the present government 2-3 years ago. Many people say, no, we don't know. But I'm telling you, there is a formal document already notified having the statutory force that is known as taxpayer charter. But the irony is this, that it is being not implemented in the manner at the ground level, that if the officers act against it as revenue officials, then there is no accountability on that. See, if you make a charter and you say it is a reform, unless that is implemented in the manner of fixing the responsibility and accountability, can it be called as a reform? So faceless assessment was one reform. Second reform is taxpayer charter. Third reform, they say faster returns. I leave it at that. Blessed, you people are more intelligent than me. Faster returns. What is this faster returns? Faster returns means you can make anything in the processing and technology, and artificial intelligence can override Dalmia ji all canons and all aesthetics, all norms given in the statute. This is where we are running, that we are running ahead and leaving behind. Aage dod, piche chhod. Faster returns means that you can keep the Income Tax Act as a last pedestal, and you can keep the artificial intelligence software, income tax portal and utility at the top. This is the sequence in the law. I am telling with responsibility how. When we see many Gujarat friends, our Gujarati chartered accountant brothers, and many chartered accountants ask me, Kapil bhai, the utility on section 87A is creating arbitrary demand and not giving benefit of the rebate. Now which rebate they are very much saying ki nahi sahab,
we are sorry, I am saying like this, 7 lakh has gone to 12 lakh. But your utility is already not giving in. People have to file chamber of tax consultant, public interest litigation people. And sir, this is what I'm at a loss. What is this going on? You are saying in the courtrooms, people are to go to high courts under judicial review to ask my lord's intervention. Am I there? My voice is coming properly, na, sir? So, Avinash bhai, people are to go to high court to seek the intervention of lordships, to say that ki utility should be, what you say, Dalmia ji, synchronized with the law, and rebate should be given, and such a small thing has to be taken to high court. And Bombay High Court in Chamber of Tax Consultant PIL, speaking through Justice M.S. Sonak, has to write number of pages explaining that law has to be given its effect and utility cannot override the law. And then Justice Sonak has to remind the tax department about Article 265 and Article 300 capital A, which everyone should respect already. Now, see a different angle. We are all reading from the newspaper that 12 lakh is the rebate in the new regime now in Section 87, Avinash ji. Am I right? 12 lakh rebate. We are all very excited to hear this announcement. But what is happening on the ground ki when your system is not giving some benefit, left hand is, you are giving it from one hand and taking it from the, is it the way? And then people have to go to high court and file PILs for getting 87 a rebate, Dalmia ji. And then there is no solution to this ever increasing problem of mismatch between the utility, software and portal and artificial intelligence versus Income Tax Act. What is the statute? And being a small person, I don't know the law too much. That act has to prevail first. Or everything utility can never cross the act. Supreme Court Justice P.S. Narasimhan Saab in income tax matter of Sunil Bhagat versus CBDT. You can note this citation. This is a very landmark order of Supreme Court. Sunil Bhagat versus CBDT has directed CBDT to sensitize its to bring its house in order and see that ki sab software and utility does not go against Income Tax Act 1961. मैं इस बात को प्रधान जी इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो इतना अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं 12 लाख रुपए का, बहुत अच्छी बात है, दिस इज वेरी वेलकम। न्यू रिजीम में 87 को आपने 7 लाख से 12 कर दिया। अब लोगों के अपने सवाल भी है कि ये न्यू रिजीम के लिए ही ज्यादा लोग जाएंगे। अभी तो उन्होंने बोल भी दिया कि आज तो आ ही गया कि हम न्यू रिजीम की तरफ लाना चाहते हैं सब लोगों को, अभी बोल दिया इन्होंने, आज बहुत सारे न्यूज़पेपर में है अविनाश जी। पर क्वेश्चन ये है कि फास्टर रिटर्न का क्या मतलब है, और ये सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग में जो टेक्नोलॉजी की वजह से लिटिगेशन क्रिएट हो रही है 143(1) और सीपीसी के द्वारा, उसके लिए रिट फाइल हो रही है दालबिया जी, उसके लिए अपील में जाना पड़ रहा है, उसके लिए रेक्टिफिकेशन डालना पड़ रहा है, क्यों क्या वो लिटिगेशन वो न्याय मिल रहा है उसको शशि को वो छोटे से अमाउंट के लिए। दिस इज द इंट्रोस्पेक्शन पॉइंट एंड दिस इज द ओकेजन व्हेन इट शुड हैव बीन सेड इन द लॉ कि नहीं, इफ देयर इज एनी सिचुएशन वेयर लॉ को के हिसाब से सॉफ्टवेयर ने नहीं कहा तो लॉ के हिसाब से चला जाएगा। ऐसा लिखने में पोदार जी क्या दिक्कत होती है? मैं आप पोदार जी बोलिए, कैन यू ओपन योर माइक अविनाश भाई, यू टेल मी सर, दिस इज एन एवरग्रीनिंग प्रॉब्लम सर। सर क्या बोल सकते हैं वो, नहीं सर, जो आपने बोला सर रियलिटी यही है कि उनके लिए लॉ सेकेंडरी हो गया है और उनके जो सिस्टम्स है वो भी प्राइमरी हो गया है। नहीं, आप एक तरफ तो तब जब आप ये, मैं एक और पैराग्राफ पे भी आ रहा हूं, जब आप न्याय की बात कर रहे हैं, जब आप एक ट्रस्ट फर्स्ट और सिक्योरिटाइज लेटर की बात कर रहे हैं, करेक्ट, जब आप ये बात कर रहे हैं कि हम फेयर गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जब आप रेड्यूस्ड लिटिगेशन और इंक्रीज सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं दालमिया जी, ये सारे पैरामीटर बोलने के लिए या करने के लिए, उसके हिसाब से जो आज हमें लिटिगेशन, मेरे पास केस आता है, शशि बोलता है मिस्टर गोयल, आई हैव माय असेसमेंट और माय प्रोसेसिंग बाय सीपीसी इज डन इन द मैनर एज इफ सीपीसी इज ऑल अबव द इनकम टैक्स एक्ट अंडर 139 सबसेक्शन 9 एंड 143(1) एंड दे आर नॉट रेडी टू, दे से हमारे लिए कुछ और कानून है। आई डोंट नो व्हाट इनविजिबल लॉ दे हैव इन देयर माइंड। करेक्ट। और उसको उसके लिए विशाल जी लिटिगेशन करना पड़ता है, वकील कपिल गोयल जैसा करना पड़ता है, उसको फीस देना पड़ता है, कपिल गोयल को दक्षिणा देना पड़ता है। कपिल गोयल बिना दक्षिणा के काम नहीं करता है क्योंकि वो वकील है। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए है दालमिया साहब। अभी 3 पॉइंट मैंने बोला, फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, थर्ड फास्टर रिटर्न, दीज आर द 3 रिफॉर्म्स। अभी फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ अविनाश भाई इन्होंने बोला है ऑनरेबल एफएम ने, ऑलमोस्ट 99%। सी मैं आई अगेन हम्बली सबमिट विद विनम्रता, हमारा कोई भी पर्पस किसी को वो करना नहीं है, हमारा एकेडमिक स्टूडेंट ऑफ लॉ की तरह एक बात हम कह रहे हैं, हमारी बात से हो सकता है किसी को इत्तेफाक ना रखता हो तो उसका भी हम सम्मान करते हैं और हमें फॉरगिव करें अगर ये सिर्फ एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के नाते एक एकेडमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम्बल सबमिशन है, इसका कोई और भाव बिल्कुल दूर दूर तक अविनाश भाई, there is no other feeling, only submission is academic sense and as a student of law, as a humble citizen of this country sir. So almost 99% returns being self assessed. Now take a point Avinash bhai,
99% रिटर्न सेल्फ असेस्ड। मेरे को ऐसा लगता है सर, जो आपने एक ही बात लिखा है, अभी 148 कितना होने लग गया है, ये भी तो लिखिए ना कि 148 हर एक केस में जहां हम रिटर्न नहीं करते, इनसाइट पोर्टल एक ऐसा जगह बन गया वैकुंठ धाम की तरह कि जो भी चीज इनसाइट पोर्टल पे आ जाएगा विशाल भाई, वो 148 को जम 148, करेक्ट। तो ये बात कैसे लिखा गया फिर, रिफॉर्म ऑलमोस्ट 99% रिटर्न ऑन सेल्फ असेसमेंट। ये चौथा पॉइंट है, ये कौन सी, इट हैज टू हैव सम बैकिंग सर, इट कांट बी लाइक दिस कि आपने बोल दिया और हो गया। हमारा अनुभव तो ये है कि रोज हर एक केस में 148 होता है। अभी कितना फेक इनवाइसेस के बेस पे जीएसटी वाला का, आपके डिपार्टमेंट का वजह से, जीएसटी का वजह से हमारे को इनकम टैक्स हो रहा है। लोग कहेंगे नहीं मिस्टर गोयल आप, मैं सी किसी ने गलत किया उसका 148 होना चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जीएसटी एक्ट का पर्पस अलग है, इनकम टैक्स एक्ट अलग है। आप जीएसटी का को अचीव करने के लिए इनकम टैक्स लगा रहे हैं, इनकम टैक्स को अचीव करने के लिए जीएसटी लगा रहे हैं। दिस इज द वे यू कैन गो, एंड कोर्ट्स इन द कंट्री आर फ्राउनिंग इट एंड डेप्रिकेटिंग इट, that you can't achieve the purpose of one legislation through other legislation by disguise means, by masquerade, by this kind of maneuvering. What is this going on? And 99%, see, I submit Vinash bhai with due reverence that my experience with last 4 year 148 is this, कि the moment they now not scrutinize, they give 148 moment there is an information flashing on the inside portal. Last time when I came in January in your program, you invited me, I said that 5 विवाद से विश्वास. Now see, विवाद से विश्वास is a reform. When you bring Vivad se Vishwas, Ashu bhai, 1.0 and 2.0, it shows that it shows a healthy picture, good picture. It shows that your Vivad are so much. It shows that by any means tax should come. I now recall one of the countries, and it's my habit. I really worship just Mr. Palkiwala. Any good lawyer will worship him because he is all our role model. And this country has no better lawyer than Mr. Palkiwala, and he was the one budget analyst whose budget speeches were here at a time with more excitement than what FM was saying. Yes. When Bourbon Stadium was filled with 1 lakh people and people were standing across, and that was the way. He was never doing appeasement. What he said, Ashu bhai, one very important line. He said that when the government collects taxes, na, it is like this, you are taking blood from the artilleries of the taxpayer. And the way we are going about it, we say I will correlate everything with see, now you are saying that we are making it very tax friendly and we are making it very justified, but I'm telling you it is not happening on the ground like this. And people are to go from here to litigation and hire, I'm saying, advocates and go to writ petitions and wait for endless, infinite and perpetual litigation, infinite litigation, Avinash ji, which helps me like lawyers. Ma Lakshmi is blissful to me. I always say, I already said. But Palkiwala Sahab says कि when you are making any tax, you should appreciate you are taking, and you should not be like that कि you are taking all blood from the taxpayer artilleries by any means. And secondly, he warned, I have a book, MV Kamath, on life of Palkiwala Sahab, in which all his budget speeches have been Podarji given, and I have all budget speeches now with me. In one budget speech, Mr. Palkiwala Sahab said, Ashu bhai, it is worth listening, that parliamentary legislation should not be replaced by bureaucratic legislation. That legislation should not be passed by parliament, but what bureaucrats are making. It should have proper discussion. It should have proper analysis. It should have, as Avinash bhai was saying, that there should be. Now we have income tax law, new coming out. It may come in day or two after the 2-3 days. So my voice is clear now, Avinash bhai? Yes, absolutely. So it is very interesting that they say that these 5 reforms are there. Vivad se Vishwas, I was telling. Vivad, how many Vivad has been there pending with the CIT appeal? And Vivad se Vishwas coming, it means it is a good thing. It means why Vivad are created and why so much of Vivad are pending. So 5 reforms, I recapitulate what they say. You can yourself, I have given some idea: faceless assessment, taxpayer charter, faster returns, almost 99% return self-assessment, Vivad se Vishwas. These 5 are according to the Honorable Finance Minister, ma'am, para 94, the reforms. Next line, she says a very important slogan which I request all of you to take note of. Trust first, scrutinize later. This is a very beautiful. जिसने भी बनाया इसको बहुत अच्छा है. ये मुझे इतना अच्छा लगा विशाल भाई. It's so beautiful. है ना, राधिका रमन तिहारा, वो मैंने बोला. ये trust first,
अभी देखिए सब लोग अपना ट्रस्ट फर्स्ट सिक्योरिटाइज लेटर। अभी क्या हो रहा है, ऐसा होता है कि कभी आप पे ट्रस्ट होता है, अभी 148 होता है, वो कह रहे हैं ट्रस्ट फर्स्ट बाद में क्या, पहले आप बताओ आपका क्या ट्रांजेक्शन है, ट्रस्ट बाद में देखेंगे। सिक्योरिटी आप पहले अपना कागज लेके आओ, आप हमारे को बताओ आपने क्या किया, हमारे हम नहीं बताएंगे हमको क्या है। तो ट्रस्ट फर्स्ट सिक्योरिटाइज लेटर आप छाप तो सकते ही है रिटर्न सबमिशन में, एक वर्ड तो मिल ही गया, चाहे माने नहीं माने कोई। पर ये एक अलग विचार का विषय है कि ये प्रैक्टिकली हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये होने लग जाए तो कपिल गोयल का काम आधा रह जाएगा। सर अच्छा है, बहुत बढ़िया, बाकी बिहारी बढ़िया है, और राधे राधे राधा राधे बाकी बिहारी की द्वारकाधीश की दया होगी। पर ये ट्रस्ट फर्स्ट सिक्योरिटाइज लेटर अविनाश बाबू हो रहा है? बोलिए बोलिए, आप इतना दिखते हैं सर तो सर सेल्फ सेल्फ असेसमेंट तो केवल नाम है सर, बाकी तो नहीं नहीं, ट्रस्ट फर्स्ट दे सिक्योरिटाइज लेटर। सवाल ही नहीं है सर। ट्रस्ट नहीं नहीं, ट्रस्ट फर्स्ट का मतलब ये होता है कि आप जो कर रहे हैं हमें पहले कबूल है, करेक्ट। हम बाद में देखेंगे कि आपने गलत किया है। मेरे को तो ऐसा कभी लगता ही नहीं कि हो रहा ये तो है। मान के ही चलते हैं कि आप गलती कर रहे हो, आप सही कर ही नहीं रहे हो। अभी आशु भाई ने क्या बोला था कि गोयल साहब उनका माइंडसेट ऐसा है। बिल्कुल। ये अच्छा वर्ड लिखा है सर, जिसने भी लिखा है। पर अभी जो मतलब जिसने भी अब लिखा है बनाया, ये बहुत अच्छा, ट्रस्ट फर्स्ट सिक्योरिटाइज। मैंने तो अभी इसको पकड़ लिया है, मैं अपना छापने वाला हूँ इसको कई जगह, कट कॉपी पेस्ट करके, कि इस पैराग्राफ में ट्रस्ट फर्स्ट सिक्योरिटाइज। ये हमारी चार्टेड अकाउंटेंट की टिपिकल आदत होती है, हम तो अपना लिखेंगे भैया। और मैं ये बता दूं विशाल भाई, मैं चाहे वकील हूं और मुझे डिग्री मिल गई, मेरा दिल और आत्मा सीए का ही है, मैं सीए ही हूं आत्मा से, और मुझे गर्व है, फक्र है, और हमेशा रहेगा जब तक मेरी सांस है आखिरी। मैं तो बिहारी जी से हमेशा बोलता हूं कि मुझे हमेशा सीए ही बनाए सर, एनी। तो 5 बातें इन्होंने कही, एक ट्रस्ट फर्स्ट सिक्योरिटाइज लेटर और नया लॉ आएगा। अब आते हैं पैरा 134 पे, पैरा 130 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, पैरा 134 भी अविनाश भाई पढ़ने के लिए, इसको भी पढ़ते हैं। अमेंडमेंट्स नहीं है, वो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। पर ये 2-3 पैराग्राफ हैं, इससे इनकम टैक्स लॉ नया जो आने वाला है 1-2 दिनों में, जो सस्पेंस मिस्ट्री मेरे अंदर भी है कि क्या होगा वो कैसा होगा। जैसे होता नहीं आशु भाई, एक नया जैसे होता है कोई घर में सदस्य आने वाला है, हम सोचते हैं कैसा होगा वो, और उसका कैसा कॉम्प्लेक्शन, सब चीजें कैसे होगा। पैरा 134 in part A, quote, in part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of the key reforms. Para 94 I have read, to realize our vision of Viksit Bharat in respect of criminal law. Our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita in replace of Bharatiya Dand Sanhita. Pause. दे से कि साहब हम भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता ले आए, अब हमारा फोकस न्याय पे है, दंड पे नहीं है। Next line, I am happy to inform this August House and the country that new income tax bill will carry forward the same spirit of court न्याय, justice. आशु भाई, कौन सा जस्टिस, कौन सा न्याय? जो लिटिगेशन को जन्म देने वाला न्याय, जो आदमी को अनफाइनाइट अनसर्टेनिटी में जो एडम साहब कहते थे नहीं होनी चाहिए, वो वाला न्याय? बोलिए बोलिए आशु भाई, बोलिए, बताइए, बोलिए क्या न्याय। आप बड़े लर्नेड आदमी, बोलिए दालमी साहब, कौन सा न्याय सर? सर जो बेसिकली जो बोला जा रहा है और जो हो रहा है प्रैक्टिकली ऑल टुगेदर, आपने बोला ना, इट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, अगली लाइन देखिए, द न्यू बिल विल बी क्लियर विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम ह्यूमिलिटी, द न्यू बिल विल बी क्लियर एंड डायरेक्ट इन टेक्स्ट। डायरेक्ट मतलब सीधा होगा, वो क्लियर होगा, तो आज तक नहीं था वो, ठीक है कोई बात। इन डायरेक्ट टैक्स विद क्लोज टू हाफ ऑफ द प्रेजेंट, देखिए विशाल भाई कैसे हंस रहे हैं, इन टैक्स विद क्लोज टू हाफ ऑफ द प्रेजेंट लॉ, मतलब आधा होगा, उसका वजन आधा हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ बोथ चैप्टर्स एंड वर्ड्स। अब अविनाश भाई पता चले अंग्रेजी तो आधी हो गई और वजन भी आधा हो गया, पर जो मतलब निकल के आया वो सब मिस इंटरप्रेट हो गया। नहीं नहीं, वो कहीं और किसी कंट्री के अंदर किसी और प्लेनेट पे ले जाए आपको। करेक्ट। माफ करिएगा गुस्ताखी। It will be simple to understand for taxpayers and tax administration, leading to tax certainty and reduce litigation. जब ये वर्ड पढ़ता हूँ तो बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है, tax certainty and reduce litigation। सर ये पैराडॉक्सिकल वर्ड्स है, कैसे वर्ड हैं अविनाश भाई? So these are the 2 paragraphs which I found interesting। और 2 आंकड़े, 90 lakh people have opted for updated return and 33,000 have gone for विवाद से विश्वास 2024। कितने लोगों ने अपडेटेड रिटर्न दिया विशाल जी? 90 लाख। और कितना लोग विवाद से विश्वास में आए? 33,000, 33,000। भारतीय न्याय संहिता। अब अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसमें मेरे को नजर आया ब्रदर, पैरा 107 में, अविनाश भाई आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, यू आर ए ग्रेट लीगल मैन। इसमें लिखा है
जन विश्वास बिल 2.0 आएगा, जिसमें बहुत सारा 100 प्रोविजन वेरियस लॉ में डिक्रिमिनलाइज होगा। अभी इसको भी देखने लायक होगा, जन विश्वास बिल 2.0, आप अंडरलाइन कर ले, पैरा 107। ये तो मेरा बजट का बात था आशु भाई, बजट स्पीच का। मैं जनरली, हमारी आदत है, हम बजट स्पीच, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल 2025 और फाइनेंस बिल, हम तीन चीजों को साथ मिलाकर पढ़ते हैं, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, विच आवर एल्डर्स एक्सपीरियंस सेज 3 डॉक्यूमेंट्स आर की: बजट स्पीच, memorandum explaining provision of the finance bill, and the finance bills. Now, coming to the various amendments which have been made in this bill, in the income tax statute, though new law is coming, and people have various questions, various means maze of questions, and therefore government has coming daily with some kind of CBD chairman ki sahab, this will happen, this may happen. And please, now Kapil Goyal kind of people, or as Mr. Podar will appreciate, that when GST came, now when a new legislation came or new draft legislation even came, some people were saying, Mr. Goyal, it will not be act. As we know, it will be bill only. Yes. But at the same time, this bill will definitely create, Ashu bhai, some kind of, it is not like this, ki psychologically it's going to be a neutral event. Nobody can say. Even they are now saying in the press, in the media today, national newspaper carry Avinash bhai, that this new law which they will come, they will have some overlapping area with the Income Tax Act, and they will have then sunset provisions and transition provisions. Yes, correct, exactly. So, but it is how it is going to take place. It means that this new law is not going to take place after 2-3 years from this kind of statements. Anyhow, I don't want that it should apply immediately, but I humbly say that if this law comes, Ashu bhai, and this has some kind of overlapping with income tax law, and we have to face another challenge of again making comparison of words, phrases, comma, full stop with the old law, and then judges and all policymakers and tax consultants and taxpayer have to do that Herculean, gargantuan, and a ordeal exercise. It is definitely going to be very challenging and struggling, at to say in most chaste words. So Vinash bhai, this new law is going to definitely take the test of many people. Yes. And speakers like us, who are sometimes called, many times called like that, I am now facing heat for myself. And this heat is due to Ashu bhai, that now next 1 year for me will be a troubling year as far as this new law is concerned vis-a-vis Kapil Goyal. So I have noted a chain of amendments, Podarji, from section 9 to, sorry, my throat is slightly, section 9 to section 282 last, section 280, the last amendment is 285 BAA. So now we have to, if we have to make a, what you say, executive summary, Ashu bhai, what is the summary of these all amendments? You can keep them in 4-5 categories. One set of amendment is in TDS provisions, tax deduction at source, which and one set of amendment is in this penalty provisions, Avinash bhai, Income Tax Act penalty provisions. And one set of amendment is definitely there in that very interesting, exciting, attractive amendment of section 87 capital A and read with 115 BAC 1A, that is new tax regime and tax rebate being increased, and people are given impetus to go to new tax regime to 12 lakh rupees income, no tax in new tax regime, 115 BAC 1A read with 87A rebate. That is third category of amendment. Fourth category is this: there are some amendments made in charitable trust, some amendments made in house property, some amendment made in updated return, like that. So I may take one by one all these amendments. Section 9, I take first amendment. Well, you can also look it from the clause by clause or section wise, but key amendments, Podar Sahab, I will just highlight. Section 9 is the concept relating to deemed accrual of income in India. There was a concept of business connection and significant economic presence. Business connection part used to say that only if foreign resident operations are confined to purchased for further export, then it will not lead to a business connection, taxable business connection in India. That was not there in significant economic presence thing. Now they say that what we have already given exemption in business connections of, this purchase in India for export will not lead to business connection. ये business significant economic presence में भी लागू हो जाएगा, वहां पर भी नहीं बनेगा significant economic presence अगर आप इंडिया में सिर्फ माल परचेज कर रहे हैं बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए. वो सेक्शन 9 में संशोधन किया गया है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को और बिजनेस कनेक्शन में कोहेरेंस लाने. आई ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन हिंदी. सेकेंड, सेक्शन 10 में एक अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल पेंशन ट्रस्ट के अंदर से पैसा विड्रॉ होगा उसमें 25% तक अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो एग्जाम्प्ट रहेगा. सेक्शन 10 क्लॉज 12 कैपिटल BA. अविनाश भाई,
Third amendment is very important, sir. Charitable trust, section 12, capital AB, subsection 1 and subsection 4. Now 12 AB they say कि small trust का मतलब ये है सर, जिसका पिछला 2 साल का इनकम, preceding 2 years का इनकम, last 2 years income is less than, total income is less than 5 crore rupees, that is called as small trust. उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो पहले 5 years का मिल रहा था वो अब 10 year का मिलेगा. Am I there? 12AB subsection 1, that small trust having total income less than 5 crore rupees will be given provisional registration, Ashu bhai, for 10 years instead of 5 years. किसी ने कहा मिस्टर गोयल, जिनको पहले से 5 साल मिला हुआ है और अभी 5 साल खत्म नहीं हुए हैं, क्या वो 10 साल बढ़ जाएंगे? देखिए अविनाश भाई, लोग कैसे, हमारे भाई कैसे सवाल पूछते हैं, हमने तो बजट बनाया नहीं, अभी हमारे से सवाल ऐसा पूछते हैं जैसे हमने नहीं बजट बना लिया है. हम तो बोल रहे हैं सिर्फ जो लिखा है. विशाल जी इसलिए बुला रहे हैं हमारे को. अभी 12 मुझे बताना पड़ेगा ना, मैं स्पीकर हूँ. 12AB सबसेक्शन 1 का ये जो अमेंडमेंट है सर, 5 to 10 years, in my humble opinion, if it is ameliorative, if it is relief oriented, beneficial, then it should apply to those cases where pending thing is there and the benefit can be given, if I am not wrong अविनाश भाई, कि जिसका 5 साल अभी खत्म नहीं हुआ है उसको भी 10 years मिल सकता है. बट इसके लिए माइंडसेट होना चाहिए देने का. It is with a caveat. The person who gives this benefits na, we have seen a practical hiccup, impediment. They believe that it is giving from their house. It is not the law benefit. Sorry. 12AB amendment is like this: small trust having total income of less than 5 crore in the preceding 2 years, their provisional registration will be for 10 years, so that they not face the burden of compliance. This is the intention. Second amendment, see, that is why I was saying this new law is to be very testing. Dalmia, kindly note, you also pay attention. 12AB subsection 4, what they did few years ago only. It's not like this, that is this amendment which I'm now taking now. 12AB registration cancellation, there is a concept called specified violation. If a charitable trust, Avinash bhai, makes specified violation, then its registration can be cancelled under section 12 capital AB subsection 4. Now in this specified violation, Vishalji, there was an amendment which says that if you file an application which is an incomplete, that can also lead to drastic and draconian consequence of registration cancellation. That was done by the in the recent past only on this amendment. Now they realize, no, this is very bad. Minor violation should not lead to registration cancellation. They correct it. Now they say 12AB4 specified violation. Incomplete application will not attract the lethal consequence of registration cancellation. So amendment is incomplete part, Ashu bhai, they have deleted. Now I ask a question. When you made it, I see Vishal bhai smile is saying so much thing. And now when you delete it, is there anything in this our great system ki ask why you made it at the first place? Who is responsible for these changes? And why you carried this kind of wrong changes? And if people have suffered and their registration has been cancelled due to incomplete, will they now be replaced in the restitution sense, Avinash ji? In the constitutional norms, although Constitution of India, we say, and I love it, we all great countrymen, people love Constitution. But whether this kind of law making, when you first make the wrong law, then you after say that now we are correcting it, then it is a good move. You know what is this way of doing the things? Ashu bhai, first you make a very, just a kind of a very negative thing. Then after some years you say, no, we are rationalizing it, we are doing it good thing. I am a ulta man. I am a adu man. I say adu, sorry. I am a little buddhi man. Why you did in the first place? Avinash bhai, tell you are our captain of this ship. Tell us why these things happen. First you make wrong amendments, then you make a course correction, and then you say course correction is a sweetener. 12AB4 specified violation, incomplete form parties. Section 13, related person. Charitable trust people, when they make transaction with related person, they have to follow the norm of arm length price. Now there was a criteria, Saab, who will be the related person of a trust, especially who is making the donation. Now they have said a person who in section 13 subsection 3, related person concept, charitable trust, that a person who is making donation, Ashu bhai, of 1 lakh rupees more in a year and aggregate till the time 10 lakh in the lifetime, he will be called as a related person qua that trust. Now what will happen? The moment it will come related person, then the norm of any other commercial transaction done with that particular person will come under the radar of ALP. So section 12AB and section 13 amendments, Avinash bhai, I have explained charitable trust part. Section 17 is the perquisite amendment, given power to the CBDT. They say
25 years ago, 30 years ago, there was a limit fixed cap of some perquisite. They have given Ashu Bhai power, delegated power to CBDT, rule making body, that it can specify higher limit given the economic condition of the country. Section 23, annual value of house property, income from house property section. There was a norm that if you are having house property which is self-occupied house, or which you could not occupy for a particular justified reason, then your annual value could be taken as nil up to 2 houses. Now, there was a clause in section 23 subsection 2, Podarji, which says that if you are not able to occupy, you have to give justified reason, that particular reason that you, due to business occupation, etc., you can't do. Now, what they have done is they have enlarged the scope of this exemption to self-occupied house. If you can't occupy, Vishal Bhai, for any reason, then also till 2 houses, you can claim the self-occupied house annual value to be 0, nil, shunya. Is it clear, sir? For any, the change is this: earlier there was a restricted area of exemption that you can only in specified situation can claim annual value to be nil. But now, if you are not able to occupy annual this house for any reason, then you can claim it as nil. Any reason. There is a section inserted in the Income Tax Act Business Head now, 44BD, presumptive income. Not very much, but maybe some people are there. Foreign companies coming in India, bringing technology and services for electronic sector, that therefore them, they have brought, Avinash Bhai, presumptive taxation norm, they can be taxed at 25% of the receipts. People, foreign companies coming in India, rendering services and technology to the Indian people, having Ministry of Technology, so kind of a thing. So presumptive income norm is given so that they can bring technology and services in India. Maybe in Gujarat, you have these people coming, 45 subsection, that 44BD, that is a section 44BD. 45(1)B change is like this: capital gain, that unit-linked insurance plan redemption, which does not fall in 1010D, will be treated as capital asset and their capital gain will be taxed under the head capital gains as equity-oriented fund. Section 45, subsection 1, capital B. Next change is carry forward of loss due to amalgamation business organization. Section 72, capital A and 72AA existingly says that it can be carried forward infinitely. Now they have said, Ashu Bhai, section 72, capital A and 72AA, any business reorganization or amalgamation happening after 1/4/2025, first apply 2025, only 8 years maximum cap, Avinash Bhai, they can carry forward it. Are you getting my point? So their word used in the memorandum is very interesting word. नोट बोरिंग में उसमें लिखा है एवरग्रीनिंग हो रहा था लॉस का, मतलब वो अनंत काल तक चल रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम 8 साल तक डाल रहे हैं। हिंदी में बोलना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम समझा ही नहीं पाते अपनी बात को कई बार, सॉरी। और हिंदी अच्छा लैंग्वेज, ऐसा नहीं है हिंदी बुरा लैंग्वेज है, लोगों को कुछ को अजीब सा ना लगे। 87A, एक बार क्या हुआ अविनाश भाई, एक हमारे जज साहब थे दिल्ली हाई कोर्ट के, थोड़ा चर्चा को करने के लिए कह रहा हूँ, और मेरे को आदत है इंग्लिश के साथ अपनी बात हिंदी में कहने की, ताकि मेरी बात कम्युनिकेट हो जाए जिसको मैं बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन का नियम भी यही है कि जिसको बात बोल रहे हैं वो समझ में भी तो आनी चाहिए, तो ना मुझे अपने आप को बोलनी है। तो मैंने जज साहब को, क्रिमिनल कोर्ट में टीडीएस प्रोसिक्यूशन का मैटर था, मैंने उनको हिंदी में बोल दिया 2-3 बार एक पढ़ को, कह रहे आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहे वकील साहब? अब वो कोर्ट पूरी भरी हुई थी, मैं भी थोड़ा आलू टाइप का आदमी हूँ। जैसा मैंने कहा सर देखिए एक बात सुनिए, आप हम हिंदी हमारे राष्ट्र में इस समय, हमारे आज के ऑनरेबल पीएम के राज में आप कह सकते हैं हिंदी में मेरे को बात करना कोई गुनाह है? कोई मेरे को हिंदी में बात करने की वजह से मैं क्या कम अच्छा वकील या बुरा वकील इस बात पे डाइट होगा कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ? तो नहीं कह रहे नहीं आप बोलिए, बोल रहे, तो मैंने भी थोड़ा अपना टोन चेंज कर दिया। मैंने कहा हिंदी तो बहुत हमारी मातृभाषा है, हिंदी में सुनने में क्या दिक्कत होगी, है विशाल भाई? एनी हाउस, चलिए तो लाइटर साइड पे बात थी। तो कई बार क्या होता है, इंग्लिश तो आप बोल ही रहे हैं बट आप हिंदी में बोल रहे हैं, तो उससे आपका जो बात बोल रहा है वो आपको पता चलना भी चाहिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। 87A और 115BAC, देखिए क्या चीज है। 1A मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता, मैं अपना रिटर्न ही कई सालों से नहीं बढ़ रहा हूँ, ये कैविट लगा रहा हूँ सर पिलर पहले, और मेरे को आपसे बिल्कुल कम समझ में आ रहा है ये चेंज, ये भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा चेंज। वैसे भी मुझे बहुत कम चीजें कम समझ में आती है, पर ये चीज तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। पोदार साहब क्यों नहीं आ रही विशाल भाई? 87A और 115BAC 1A, आप कहेंगे आप इतने सेमिनार करते हैं, इतने पढ़ाते, लोगों को स्पीकर देते हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके लिए कुछ अलग टाइप का अरिथमेटिक्स और सब चीजें समझना पड़ेगा। अब आप कैसे बोलेंगे कि ये चेंज एब्स्ट्रैक्ट में अच्छा है बुरा है? ओल्ड रिजीम में कुछ नहीं हुआ चेंज, लेट इज बी क्लियर। न्यू रिजीम जो लेंगे 115BAC के अंदर, उसके लिए स्लैब चेंज हुआ है, उसको 87A का रिबेट 7 लाख की जगह 12 लाख मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा न्यू रिजीम जो ऑप्ट करेगा, उसके लिए स्पेशल इनकम के लिए नहीं मिलेगा रिबेट, नॉर्मल इनकम के लिए मिलेगा। क्लियर है पोदार जी? और आने अभी तो आज उन्होंने कल परसों न्यूज में आ गया सर,
ये 87 कैपिटल है, 115 बीएसी 1 का चेंज का मतलब ये कि आने वाले टाइम में न्यू रिजीम को ही प्रमोट करना। ये क्लियर है सर सबके लिए? और जो प्रोवाइजो रिबेट का है उसमें रिबेट 7 लाख जहां था 12 लाख हो जाएगा, और जो उन्होंने टैक्स का उसमें था 25,000 से 60,000। ये तो अरिथमेटिक्स ही है विशाल भाई, तो ऑप्ट करने वाली बात है ओल्ड और न्यू रिजिम में, पर अब तो ये लग रहा है कि सबके लिए न्यू रिजिम का ही फोकस पॉइंट है। अगला चेंज सर ट्रांसफर प्राइसिंग का है, 92 कैपिटल सीए 155-21 सबसेक्शन 21। दो सेक्शन आप नोट कर लीजिए, 92 सीए एंड 155 सबसेक्शन 21। Transfer pricing is again not that area where I do lot many cases, but this change is very interesting from that angle. In transfer pricing, they have brought the concept of block thing. If you have an international transaction with an associated enterprise in a particular area and your ALP is determined by transfer pricing TPO officer, TPO, and if you have similar transactions for consecutive 2 years, then in the first year what is determined can be applied at the option of the SSE for the next 2 years also for the similar transaction. I repeat, if your taxpayer has an international transaction with an associated enterprise subject to TP norms by TPO, then the ALP arm length price determined in 1 year can be applied for consecutive 2 years block to the similar transaction at the option of the taxpayer. So this change is made in section 92 capital CA. There is a subsection 3B being inserted, and board is given power to make rules and regulations to iron out the creases and make it smooth. So this is a new kind of a norm अविनाश भाई, कि 1 साल का टीपी स्टडी या 1 साल का टीपी एनालिसिस दूसरे अगले सालों में भी अप्लाई किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द टैक्स पेयर। और उसका ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन के लिए उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज किया 155 सबसेक्शन 21। हमारे पास केसेस नहीं आते टनेज टैक्सेशन के, बट टनेज टैक्सेशन का एक सेक्शन है 115V, उसमें इनलैंड वेसल्स को इंसर्ट किया गया जो इनलैंड वेसल एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब आया चेंज क्या नाम अविनाश भाई, 139 सबसेक्शन 8 कैपिटल ए का, जिसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल होता है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है। मैंने क्या कहा था अभी आपको, एक आंकड़ा दिया था स्टेटिस्टिक, कितना रिटर्न फाइल हुआ अपडेटेड, 90 लाख। अब ये लोग जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं वो पहले कितने साल तक कर सकते थे, 2 साल तक, 24 महीने तक, 24 मंथ्स। नाउ अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल टिल 48 मंथ्स, मतलब 2 साल और ऐड हो गया। नाउ 48 मंथ्स के अंदर आप भर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। 2 साल का जो भरता था उसको एडिशनल टैक्स भी देना पड़ता था, टैक्स के अलावा 25% एडिशनल टैक्स अगर 1 साल में भर रहे हैं, और 50% तब अविनाश भाई जब आप 2 साल के अंदर भर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि साहब व्हाट द चेंज, 139 सबसेक्शन 8 है और सेक्शन 140B, दो नोट कर लीजिए, 139 सबसेक्शन 8 है एंड 140 कैपिटल बी। 139 8 है, द चेंज इज दिस की द नॉर्म ऑफ 2 years 4 years कर दिया उसको। साथ में लिख दिया कि अगर आपको 148 कैपिटल ए का शोकॉज आया हुआ है, इफ यू हैव बीन गिवन ऑलरेडी शोकॉज इन 148 देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल द, then you are not able to file the this what you say updated return. But if you are able to get the show cause dropped and not fit case, then you can file the updated return. So till 4 years you can file the 139 subsection 8A return. Now the corresponding change is also made in the additional tax. अगर आप 24 महीने के बाद 36 महीने तक आ रहे हैं 3 साल के, तो आपको 60% एडिशनल टैक्स देना है, और आप 3 साल के पीछे 4 साल तक आ रहे हैं तो 70% देना है। कमाल है अविनाश भाई, लोग इतना टैक्स देकर जा रहे हैं तरीके से सर, वो मतलब जो देता है उसके शक्ति को पर सैल्यूट है सर, हेड्स ऑफ। तो ये अपने आप एनालाइज होना चाहिए। 140 कैपिटल बी 60% फॉर 3 till 3 years आफ्टर 2 years एंड 70% आफ्टर 3 years till 4 years. Is it clear this amendment sir? 139 है। They are saying we are inviting more people, they can come and file updated return. And this section Avinash bhai itself is a very interesting provision where the penalty is inbuilt into it, especially even when you are coming voluntarily without any pending proceeding. Kindly see that this is going on. Someday some court may say something. Anyhow, now comes our 2 important changes, which interesting changes of TDS tax deduction at source. And this and TDS change, you know Avinash bhai, I was just asking and debating that TDS chapter is already very densely populated. It has so many sections in the income tax act chapter 17B. New law will contain how many TDS, it time will tell. मतलब वो कह रहे ना हाफ हो जाएगा। I would be really very happy to see कि TDS भी आधा हो जाएगा। क्या बात है, होगा नहीं होगा विशाल भाई? ये तो कहेंगे, आप कहेंगे कपिल भाई एस्ट्रोलॉज क्यों करवा रहे हैं हमसे, हमें क्या पता क्या होगा, जब आपको भी नहीं पता तो हमें क्या पता। हाँ ये बात भी सही है सर, क्या पता। चलिए अब TDS प्रोविजंस में देयर आर 3-4 changes very interesting. First change is threshold increase. There is a very beautiful table made in the memorandum explaining Finance Bill 2025, where there is a
table containing 12 rows where अविनाश भाई they have highlighted कि किस सेक्शन में कितना थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया है. I say some Vishal bhai for just completeness of our discussion. 194 capital A is dealing with interest from security, interest other than interest from securities. वहां पहले क्या था, 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन के लिए एक थ्रेशोल्ड था, 40,000 रुपए लिए अदर्स के लिए था, आपको पता है जो पेयर बैंक वगैरह है, और 5,000 रुपए रेजिडुअल था. जहां 50,000 था सीनियर सिटीजन के लिए वो 1 लाख हो गया, जहां 40,000 था वो 50,000 हो गया, जहां 5,000 था वो 10,000 हो गया. 50,000 वाला 1 लाख हुआ सीनियर सिटीजन के लिए, वहां तक तो अच्छा है, डबल हुआ. बट जो 40-50 हुआ और 5-10 हुआ, वो कितना हुआ वो आप समझ रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. 194B और 194BB, ये विनिंग फ्रॉम जिनको होती है क्रॉस, हम तो करते नहीं विनिंग लॉटरी, हमें तो पता भी नहीं, हमारे पास, हमें अच्छा एज ए पोस्टमार्टम लॉयर लिटिगेशन सर्जन टाइप हमें क्या पता चलता है सर वैसे ही. अब ये क्या है पर बताने के लिए जरूरी है. विनिंग फ्रॉम लॉटरी और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 194B डबल बी में पहले था थ्रेशोल्ड 10,00,000 रुपए का, 10,000 रुपए का एग्रीगेट पूरा फाइनेंशियल. अब 10,000 सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए, विनिंग के लिए 10,000 सिंगल के लिए. आगे एक और चेंज इसमें अविनाश भाई है 194 कैपिटल एच में जो, और 194D और 194G में जो कमीशन के सेक्शंस हैं, इंश्योरेंस कमीशन, इनकम बाय वे ऑफ कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स एंड कमीशन और ब्रोकरेज 194H. एच बहुत कॉमन है इसलिए उसको ले लेते हैं. 15,000 रुपए का थ्रेशोल्ड था, उसको 20,000 कराया, 5,000 रुपए बढ़ा दिया, बहुत अच्छा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इससे बहुत रिलीफ मिलेगा. 194I 2,40,000 रुपए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए था. ये किराया ठीक है, ये ठीक है बढ़ाया है. 2,40,000 रुपए ये पूरे साल के था, इसमें 50,000 रुपए पर मंथ कर दिया है, 6 लाख हो गए पूरे साल का. ठीक है अविनाश भाई, समझ में आ रहा है सर. 194J फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज जो हमारे वाला काम है, 194J 30,000 से 50,000, 20,000 बढ़ गए, 20,000 भी अच्छा बढ़ गए सर. 194LA इनकम बाय वे ऑफ एनहांस कंपनसेशन 2.5 लाख से 5 लाख. ये तो थी थ्रेशोल्ड की कहानी सर. अब आते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं कोई कॉमेडी नाइट्स नहीं कर रहा हूं सर. मेरे को तो कोई, मेरे को तो, मैं तो खुद ही अपने आप को एक कॉमेडी वो मानता हूँ कि जैसे बड़ा अजीब सा व्यक्ति, मुझे समझ में कहाँ आता है, आप लोग बुलाते रहते हैं, अभी हमारे को बोलना तो आता नहीं. जैसे कहते हैं ना, बांके बिहारी के कुछ भक्त ऐसे होते हैं परमात्मा के, जिनको उनका गुणगान गाना भी नहीं आता. जैसे एक भजन में आई कि एक लाइन आई सर, ओसावा जी ने बोला ना इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान मैं तेरे दर्शनों के लिए आया तो हूं, पर मेरे पास वो वाणी और गुणगान ही नहीं है, मुझे आना ही गाना ही नहीं आता, मैं कैसे गाऊं, मुझे बताना ही नहीं आता, मुझे वो मैनर्स ही नहीं है, मुझे वो एटिकेट ही नहीं है, मेरा वो एलोक्वेंस ही नहीं है, मुझे वो स्किल ही नहीं आते. पर आप समझ लीजिए, क्योंकि आप सबके भाव समझते हैं और भाव में बहुत कुछ है. कई बार हम लिटरल सेंस से चलते हैं, पर हम इतने हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे भाव का बड़ा रोल है हमारे यहाँ. हाँ क्यों अविनाश जी? और इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, हम सब इतने, आप लोग सब मेरे से कई गुना विद्वान हैं, भाव का बहुत बड़ा रोल है सर. कहाँ था मैं सर? हाँ टीडीएस पे था. थ्रेशोल्ड की बात हमने कर ली. टैक्स कलेक्शन टीडीएस सेक्शन में एक बड़ा अच्छा चीज है, इस बजट का सबसे अच्छा चीज मुझे यही लगा विशाल भाई, आप नोट कर सकते हैं क्या. एक सेक्शन डाला गया था जिसमें ये कहा गया था अभी पिछले कुछ सालों पहले कि अगर आप किसी डिडक्टर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, क्योंकि उसको माना गया था कि उसके पास सारी शक्तियां हैं, भ्रम शक्ति, सारी शक्तियां हैं, वो ये देख सकता है कि डिडक्टिव रिटर्न भी भर रहा है नहीं भर रहा है. कमाल नहीं है सर ये. जब ये सेक्शन आया था तब भी मेरे को लगा था कि ये दुकानिया जी कैसा लॉ है. देखिए किसी को कह रहे हैं आप कि तुम डिडक्टर भाई, तुम डिडक्ट तो कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम हमारी मदद कर रहे हो, तुम ये भी देखो कुंडली मिलान करो डिडक्टी का कि उसका आईटीआर का हमारा को वो दे रहा ही नहीं दे रहा. वो काम किसका होना चाहिए वैसे चेक करने का? होना चाहिए विभाग का होना चाहिए, विभाग के पास सारी पावर है. तो वो डिडक्टर की वीडियो लगा दी और चेक ये डाल दिया ना, यूटिलिटी बना दी कि साहब अगर आप डिडक्टिंग का रिटर्न नहीं भरा होगा तो टैक्स डिडक्शन का रेट दूसरा माला पे चला जाएगा, ऊपर वाले माला पे चला जाएगा. माला समझते हैं ना, ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाएगा, एस्केलेट हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा. वो 2 सेक्शन थे, उनके नाम नोट करिए जिनको विसर्जित कर दिया गया इस बजट के द्वारा. सेक्शन 206AB और सेक्शन 206CC, इनको विसर्जित कर दिया गया. और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये गलत करा, ये करना ठीक नहीं था, इनसे डिडक्टर से ऐसा काम कर. हाँ भाई, जो आपने पहले क्यों करा इसको? लोग पूछ रहे डोकाडिया जी, मिस्टर गोयल जिसकी डिमांड आ गई उसका क्या होगा? ये ओमिट हो गया सेक्शन, ये नोट करने वाली बात है. अविनाश जी से इसमें व्यू लेंगे. 206AB और 206CC ओमिट हो गए. ओमिट का क्या मतलब होता है पोदार जी? कि वो सेक्शन कानून से माना जाएगा कभी भी नहीं था. मेरे हम्बल ओपिनियन में जो प्रोसीडिंग इसमें पहले भी हुई है उसमें भी इसका बेनिफिट, क्योंकि एम्यूलरेटिव चेंज है, बेनिफिशियल चेंज है. सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का वाटिका टाउनशिप का 367 ITR 466 जस्टिस सीकरी का फैसला है
कि बेनिफिशियल चेंज को आप रेट्रोस्पेक्टिवली पढ़ सकते हैं। तो 2 सेक्शन जो ओमिट किए गए हैं हायर टीडीएस वाले, जिसमें नॉन रिटर्न फाइलर को देखना था डिडक्टी के लिए, डिडक्टर को डिडक्टी के लिए vis-a-vis, तो वो सेक्शन थे 206 एबी टीडीएस वाला और टीसीएस वाला 206 सीसीए, उसको इस वाले फाइनेंस बिल से ओमिट कर दिया गया। अब आते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एक और 206 सी। अब देखिए सी 206 सी में क्या था, एक चेंज लाया गया था सर, वो कमाल सर। हमारे यहाँ जब जैसे कोई चीज हम करते रहते हैं ना पोदार साहब, जैसे हम डालते रहते हैं ये भी टीडीएस हो जाए ये भी हो जाए, जैसे 194 क्यू आया, वो बहुत बड़ा लोगों को, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, वो भी एक सेक्शन में कैविट लगा रहा हूं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया 194 क्यू क्या है। उसमें लिखा है कि गुड्स परचेज के ऊपर टीडीएस कटेगा, ऐसा कुछ है ना सर। और उसमें उसका उसके साथ 206 सी और 1H दोनों साथ साथ हो रहे थे ओवरलैप, मतलब एक चीज पे टीडीएस भी हो रहा था 194 क्यू में और एक चीज पे टीसीएस भी हो रहा था दुकानिया जी 206 सी सबसेक्शन 1 कैपिटल एच में। अब उनको ये समझ में आया कि इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, एक ही चीज पे टीडीएस भी हो रहा है और एक ही चीज पे, अब उसको ओवरलैपिंग को अब कहा है कि 194 क्यू ही जहां लग रहा है वही वही 194 क्यू, मतलब उन्होंने 1H को ओमिट कर दिया, कह रहे 194 क्यू ही रहेगा, पर 194 क्यू रहेगा, 206 ही 1H नहीं रहेगा। ये क्लियर हो गया सर ये बात फंडा? ये क्यों किया गया? क्योंकि एक ही चीज पे टीडीएस भी हो रहा था और एक टाइम पे, और ये नहीं बताया जा रहा जिसने बनाया था इस काबिलियत तारीफ प्रोविजन को उसको कितना साधुवाद मिल रहा है। 206C1H और 194Q के इंटरप्ले को रैशनलाइज किया गया है। चौथा चेंज, पिछले कुछ बजट पहले सर दुकानिया जी एक चेंज आया था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आप अपना ही पैसा बाहर भेजेंगे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से तो टीसीएस कलेक्ट होगा, और 206C उसका सेक्शन नोट कर लीजिए, 206C 1G, ये याद करना भी बड़ा मुश्किल है, इतना ये पता नहीं ये अच्छा करेंगे मुझे लगता है नया बिल में आएगा। 206C इसको 1G ये याद करना विशाल भाई आसान है? कोई किसी को रट्टा मारना भी हो तो भी बड़ा मुश्किल है, और किसी डिडक्टर की और टैक्स ऑडिटर की तो हिम्मत होती है, जो लोग इतना समझाते हैं आप लोग, सर आपको तो भगवान का डिडक्टर, अभी तो मैं ऑडिटर नहीं हूं, मैं तो भी वकील हूं, पर जो लोग ऑडिटर करते हैं उनका तो कमाल है सर, उनको तो सब चेक करना होता है डोकानिया जी, सब चेक करना होता है। 206C1G पे आते हैं, उसमें ये था कि 7 लाख रुपए की कैप थी कि लिबरलाइज रेमिटेंस बाहर हो रही है, तो टीसीएस के लिए कैप थी 206C1G में 7 लाख की, वो 10 लाख कर दी है। हाँ आप एजुकेशन के लिए बाहर पैसा भेज रहे हैं और वो लोन फंडेड है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहां 0 टीसीएस होगा। तो चेंज सरल सेंस में ये सिंपल सेंस में 206C सबसेक्शन 1G में liberalized remittance made abroad, the cap was 7 lakh earlier, it is now 10 lakh. For education made thing which you are funding it from the loan which is given by financial institution, then no TCS will be there, Vinashji. So this is the change of 206C subsection 1 capital G. So I have covered threshold part, I have covered 206AB, that omission, I have covered 206C1 capital H, and I have covered 206C1G. Now we, and one more thing sir, 276 double D decriminalization of TCS. Last time they have what they have done is कि अगर आपने टैक्स काट के लेट जमा कराया है रिटर्न फाइलिंग का स्टेटमेंट से पहले, तो आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा 276 डबल बी में। अभी उसको टीसीएस के लिए भी कर दिया वैसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर विशाल जी? दैट इफ यू हैव मेड ए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड यू हैव नॉट डिपॉजिटेड इट, बट बिफोर फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट दैट टाइम वो आपने उसको दे दिया है, तो आपका प्रोसिक्यूशन टीडीएस वाला नहीं होगा। ऐसा टीडीएस के लिए था, अभी उसी को समानांतर टीसीएस के लिए भी कर दिया है ऑन द एनोलॉजी एंड पैरिटी। दैट इज चेंज इन 276 डबल बी टीडीएस प्रोसिक्यूशन. नाउ कम्स द चेंज ऑफ आवर लास्ट ब्रैकेट, आई मेक से पेनल्टीज. अविनाश भाई, in this budget na there are some changes where they have made some tinkering with the some time limit Dokania ji. Earlier the time limit was, the format was from the end of the month. Now there is a very interesting thing, somewhere they have said from the end of the quarter. अभी ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो कह रहे हैं हमने किया है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा टाइम चाहिए होता है, कि फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ चलता है तो कम टाइम होता है, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर चलेगा तो एफिशिएंट रहेगा, ऐसा मेरे को समझ में आया। अभी ये मैंने नहीं, इसमें लिखा हुआ है सर, मैं पढ़ सकता हूँ, मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है, कट कॉपी आप कंट्रोल एफ, आजकल की सुविधा होती है कंट्रोल एफ मारेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें कहीं, और उसमें एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड भी लिखा है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये एफिशिएंट वर्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जब लगता है पुदार जी बड़ा अजीब सा लगता है, कातिलाना सा लगता है, जैसे क्या लगता है एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कमाल, बांके बिहारी लाल की जय और राधा रानी की जय, ठाकुर जी की जय, द्वारकाधीश की जय। कई बार मैं ये सोचता हूँ, मुझे लोग कहते हैं आप मिस्टर गोयल बड़ा रामचरितमानस और बांके बिहारी को याद करते हो, मैं तो इसलिए याद करता हूँ कि उनसे शक्ति मिलती रहती है और उनका साथ हमारे ऊपर होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे तेरे होते हुए मेरी हार नामुमकिन है पालनहार।
हमें चिंता नहीं हमारी है, उनको चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से चुटकी लेते हुए पूछा कि आपने मेरे को क्यों चुन लिया, मेरी सेना तो कौरवों के पास चली गई। 1 मिनट ले रहा हूँ थोड़ा सा अविनाश भाई। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप क्यों मेरे से मजाक कर रहे हैं? क्या आपको मैं बताऊं कि ये बात मैंने, आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हो? कह रहे मेरी जीत तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई जब आप मेरे साथ आ गए। तो जिसके साथ, जिसके अंग संग कन्हैया खड़े हैं, उसका जीत विशाल भाई निश्चित है। तो इसीलिए परमात्मा से हम तो ये बोलते हैं कि ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया हरि आपने, आप ही करने योग्य। एनी हाउस, पेनल्टी के चेंज में आते हैं। पेनल्टी के चेंज में 2 टाइप के चेंज है सर। एक चेंज तो ये है कि 5 सेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने, जहां पहले पावर थी पेनल्टी लगाने की ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास, उस 271 कैपिटल सी, 271 डी, डीए, ये 3 सेक्शन में बता रहा हूं आपको, 2 और हैं, उसमें ज्वाइंट कमिश्नर की जगह एओ को पावर दी है अविनाश भाई, ये कहकर कि क्योंकि एओ साहब ही असेसमेंट करते हैं, वही पेनल्टी लगाएंगे। पर हाँ, अगर आप पेनल्टी का सेक्शन 274 में लिखा है 274 में कि अमाउंट बढ़ा है तो ज्वाइंट कमिश्नर की अप्रूवल से लगेगी, और अप्रूवल हमारे यहाँ कैसे होती है वो हमें पता है। बट पेनल्टी लगाने का अधिकार जो ज्वाइंट कमिश्नर के पास था कुछ सेक्शनों में, उसको एओ को दिया गया है, कॉम्पिटेंट। दूसरा महत्वपूर्ण चेंज पेनल्टी के चैप्टर में सेक्शन 275 लिमिटेशन फॉर इंपोजिंग पेनल्टी में किया गया है। उसमें जो पहले पेनल्टी की लिमिटेशन की बात थी, वो जब से हमने सीए करी हम तो वही पढ़ रहे थे। अब इस बिल से वो पेनल्टी का लिमिटेशन ऐसे हो जाएगा डोकानिया जी, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, जो भी आपका एक्शन है, जैसे मान लीजिए आपका एओ ने असेसमेंट किया ना, आप अपील में गए ना रिवीजन में गए, तो जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ है उस क्वार्टर के एंड को पकड़ेंगे 6 महीने तक, वो टाइम लिमिट है, आप समझ गए सर। 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच पर्टिकुलर एक्शन विशाल बाबू इज कंप्लीटेड। 5 कंटिजेंसीज बताई गई है। जहां एक असेसमेंट हुआ वो चैलेंज नहीं हुआ कहीं पर भी, जहां असेसमेंट हुआ वो सीआईटीपी पे चैलेंज हुआ, आईटीटी में नहीं हुआ। असेसमेंट हुआ सीआईटीपी आईटीटी में चैलेंज हुआ, तो आईटीटी का ऑर्डर जब मिला उसके वो 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। जहां पेनल्टी, जहां कहीं भी फॉल नहीं कर रहा उसका अलग है। तो 5 केस उन्होंने बताए। तो जो सेक्शन 275 की पेनल्टी की लिमिटेशन का टाइम लिमिट उन्होंने चेंज कर दिया। उसका लॉजिक उन्होंने मेमोरेंडम में यही दिया है कि हमारे एओस के पास एक एफिशिएंट मॉनिटरिंग चीजें हैं ताकि वो ढंग से लगा पाए पेनल्टी। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब नया लॉ भी आ रहा है, अब उसमें भी ये सब चीजें चलेंगी। अभी तो अब जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से सर। तो कहने का मतलब ये है पोद्दार साहब कि ये जो सारा चेंज था मेरे बजट, और एक स्टार्टअप का चेंज आप नोट कर सकते हैं। उसमें उन्होंने जो स्टार्टअप थे वो टीआईएसी में उसको 1/4/2030 तक आप सेटअप कर सकते हैं सर, वो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा था। और कोई विशाल भाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये सब बजट का मेन चेंजेस यही थे। और आपको कोई और क्वेश्चन वगैरह भी हैं तो मैं हूँ आपके साथ ही। और पर एक रामचरितमानस की चौपाई के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि एक बार जब बात हुई सुंदरकांड में कि जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करूं तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि करे प्रसन्नता ऊपर। इस चौपाई का मतलब है कि जामवंत ने कहा परमात्मा आप जिस पे दयावान रहते हैं ना, वो कभी उस पे सब लोग दयावान रहते हैं, और जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा। मोहित गाबा जी कह रहे हैं प्रोवाइजो 287 एडिड विद इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेवाई, व्हाट अबाउट द पोजीशन फॉर प्रीवियस टीवाई। सर ये गाबा जी ना देखिए, ऐसे क्वेश्चंस खतर, जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा कई बार ऐसा होता है प्रधान जी, जो हमारे दोस्त लोग हैं ना, ये लोग ऐसा सोचते हैं बजट हमने बनाया है, और अगले दिन 2 दिन बाद क्वेश्चन ऐसा पूछते जैसे कपिल भाई को पता ही है सब कुछ। अब कपिल भाई तो खुद ही अभिज्ञ है। ये आयरॉनिकल है कि आप हमें बुलाते हैं बोलने के लिए, वो एक अलग विडंबना है, बट हमें विशाल भाई पता ज्यादा कुछ नहीं है। हम भी तो एक अप्रोक्सीमेशन गैस ही मार रहे हैं, और अभी तो बहुत सारा चीजें अनफोल्ड होनी है सर। आप कपिल गोयल से ऐसे सोचते हैं कि वो सीबीडीटी से बड़ा, हम लोग बड़े पॉलिसी मेकिंग में हम बड़ा स्टेक होल्डर है। भाई साहब हम कुछ भी नहीं है, हम भी आप ही की तरह हैं। और मेरे जैसे वकील जो लिटिगेशन के 2 सेक्शनों से केंद्रित रह गए, मेरे को तो जज मजाक करते हैं 148 और 68 के अलावा कपिल गोयल को केस ही कोई नहीं मिलता हो। मैं क्या करूं, बैगर कैन नॉट बी चूजर। मेरे पास 148 की प्रैक्टिस सही है सर, मैं कर ही नहीं पाता हूं कुछ और, मुझे मिलता ही नहीं कुछ और, कोई देता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए मैं राधे राधे कह रहा हूँ, बाके बिहारी लाल की राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन कुमार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। विशाल So, भाई जल्दी मिलेंगे, थोड़ा जल्दी हो गया, मतलब अगली बार जल्दी मिलेंगे। नहीं सर, it was very comprehensive and most importantly आपने जो initial budget speech के कुछ specific paras को refer किया, that was I think a very good eye opener for many of the people who are listening to this webinar. And yes, it was a very elaborative and also very apt
So I thank you, Shri Kapil Goyal sir. थोड़ा मेरी ये गला और मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मुझे फीवर भी हो रहा है सर और मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। पर मेरे को अविनाश भाई के साथ और दालमिया जी के साथ, आप लोगों के साथ जरूर कंपनी एंजॉय करनी थी। और गुजरात में हमारे द्वारकाधीश बैठे हैं और आप सूरत में हैं, और गुजरात के लोगों से भी वैसे भी मेरा प्यार अलग ही है और होना भी जरूरी है। पर वैसे मेरा प्यार बहुत अलग है अविनाश भाई गुजरात के लोगों के साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग बुलाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और हमें सीखने को मिलता है। हम सब एक लर्निंग वॉयज में हैं दालमिया जी, हर एक चीज नई चीज लर्न करते हैं और करते रहेंगे जब तक आखिरी सांस है। परमात्मा से ही आशीर्वाद है, मांगते हैं कि उनसे प्यार बढ़ता रहे और कभी हमारे अंदर कोई एरोगेंस ना आए और हम अपना काम ईमानदारी से करते रहें। Great. Thank you, sir. So now I take it ahead. I request Pramod ji to take ahead with the next part of this session. Thank you, Vishal bhai. And Kapil ji, on behalf of Ashwa Legals, really thank you very much for taking the session on direct access. And Pramod ji, but as usual, can they please check if any queries are there so that अविनाश भाई आपकी मैंने दी there are not many हाँ, queries. हाँ, One of the queries was section 194T, TDS on remuneration, I think on partners. They are providing सर remuneration at the देखिए, end ये of जो completion. सेक्शंस है ना, इनको लोगों को पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ संविधान के हिसाब से कि जो जो सेक्शन बनाता है ना, उसके जो अभी उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इनको चैलेंज भी करें। और एक चीज सिस्टम ध्यान रखें सर, मुझे जितना मोटा समझ में आया अविनाश भाई, कि जैसे किसी चीज की इनकम एक्रूवल नहीं हुई, जैसे जिसके हाथ में इनकम, टीडीएस क्या है प्रमोद भाई? टीडीएस इज ए सेकेंडरी लायबिलिटी। प्राइमरी लायबिलिटी Right. किसकी? जिसके हाथ में पैसा Accrue हुआ. जो ट्रांजैक्शन का रिसिपिएंट है, जैसे जिसपे सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन लग रहा है। अब टीडीएस डिडक्टर जब टैक्स काटता है तो हम ये नहीं मानते कि वो टैक्स विदहोल्डिंग में टैक्स चार्जेबिलिटी डिसाइड हो रही है। वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन चार्जेबिलिटी एंड विदहोल्डिंग। Right. In Court of India 312 ITR 225 Ellie Lilly and Company speaking through Justice Honorable Kapadia कि that whole income tax act is an integrated code, charging provision have to be considered। ये मैं सब बातें आपको इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब कि जब आपका टैक्स कटना होगा ना, वो तभी कट सकता है जब सामने वाले के हाथ में डिटरमाइन हो जाए कि कितना पैसा उसके हाथ में रेम्यूनरेशन वगैरह है। अब उस सेक्शन को वैसे पढ़े तो ऐसा लगता है कि वो उसमें कुछ डिस्कनेक्ट है। पिछली बार भी जब ये सेक्शन आया था तब भी अविनाश भाई बहुत डिबेट हुई थी। उस सेक्शन में काफी सारे जैसे क्या बोलते हैं, व्हाट यू से, डेफिशिएंसीज एंड ड्राफ्टिंग की भी, और उसमें एक गैप भी है कि जब आपका इनकम का पॉइंट सामने वाले के हाथ में रेम्यूनरेशन प्रमोद भाई बैलेंस शीट डेट पे होगा और टीडीएस किस डेट पे होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो कायदे से तो अभी तक तो उनका सर्कुलर आ जाना चाहिए था, उसको आयरन आउट कर देना चाहिए था। लोग 119 में जा भी सकते हैं और इसको सेक्शन को भी कंटेस्ट कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू में। अविनाश भाई कैन करेक्ट मी, है अविनाश जी? और अल्टीमेटली तो सीबीडीटी को ही इसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि जब तक इनकम का डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक टैक्स विदहोल्डिंग ऑब्लिगेशन डोकानिया जी नहीं आना चाहिए। और देखिए सर समझ लीजिए, जिसने कभी टैक्स नहीं काटा ना, एक थ्योरी ऑफ डाउटफुल पिनलाइजेशन भी होता है। हमारा डिपार्टमेंट मानता उसको कभी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्टिस नागरत्ना ने एक ऑर्डर लिखा है सी इंस्टीट्यूट के केस में, शाहजी पॉलोस में, कि अगर आप और जस्टिस संजीव खन्ना ने भी इनकम टैक्स के अंदर 462 आईटीआर में टीडीएस के कंसेप्ट में एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारतीय सेल्युलर में, नोट कर लीजिए 462 आईटीआर, जस्टिस संजीव खन्ना प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री इन भारतीय सेल्युलर इन कंटेक्स्ट ऑफ 194 एच सेड कि इफ देयर इज ए डाउट एंड ए पर्सन हैज नॉट डिडक्टेड टैक्स, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जन्म जन्मांतर के लिए आप उसको दोषी मान लेंगे डिडक्टर को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना का सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का फैसला भारतीय सेल्युलर का 462 आईटीआर में, कि आपको हर एक चीज को टीडीएस में झोंकने की जरूरत नहीं है के अंदर। और थ्योरी ऑफ डाउटफुल पेनलाइजेशन नाम की चीज है। क्या है अविनाश भाई, कभी मानता नहीं डाउटफुल पेनलाइजेशन? डोकानिया जी क्या है आपको बताऊं मैं? डाउटफुल पेनलाइजेशन मतलब ये है कि अगर आपको डाउट था टीडीएस काटने पे और आपने जेन्युइन बोनाफाइड मैनर में नहीं काटा, तो उसमें टीडीएस डिडक्टर के ऊपर कुछ नहीं होगा। आपको अगर इनकम असेस करनी है तो पे के पीछे जाइए, व्हाई टू रन बिहाइंड डिडक्टर, दैट इज थ्योरी ऑफ पेनलाइजेशन। तो ये 194 की जो सारी समस्या, ये थ्योरी ऑफ डाउटफुल पेनलाइजेशन से भी एड्रेस हो गई जस्टिस संजीव खन्ना के भारतीय सेल्युलर के फैसले से, और जस्टिस कपाड़िया के एली लिलियन कंपनी से 312 आईटीआर कौन सा मैंने बोला था, उससे भी होगी कि टीडीएस और चार्जेबिलिटी को विदहोल्डिंग को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। One more question is there, sir. 194Q versus 206CR. Please explain. सर ये भी चैलेंज करिए एक्चुअल में एक तो हमें ये नियम बनाना पड़ेगा अविनाश भाई, सब लोगों को। मैं बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूँ, मुझे इतना कॉन्स्टिट्यूशनल ज्ञान नहीं, पर मैंने अभी प्रमोद भाई आजकल मेरा सारा ज्यादा ना, जैसे अभी पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, मैंने 5 फ्रेज लर्न करे। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये मेरे बनाए हुए नहीं है। कपिल गोयल की उतनी औकात नहीं है। हमारे देश के बड़े बड़े जजेस चंद्रचूड़ साहब तक से आज तक के सारे जजेस ने लिखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनली सेंस से हमें जीवन जीना चाहिए। उसमें क्या आया, जुडिशियल रिव्यू क्या आया कि आप लेजिस्लेटिव एक्शन को भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और आप पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए नागरिक के पास या सिटीजन के पास कि वो किसी भी प्रावधान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी करा सके। ये एक अलग बात है कि उसमें उसको डिक्लेयर नहीं करते, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होती है, पोद्दार साहब नोस, बट राइट टू चैलेंज तो है ना। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो जस्टिस संजीव खन्ना के वर्ड्स थे ना, मैं आपको भारतीय सेल्युलर का डिसीजन दे चुका हूं, उसमें बहुत अच्छा एक पैराग्राफ लिखा है डोकानिया साहब, चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने। अच्छा, खन्ना साहब हमारे देश में इनकम टैक्स के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट में कई सालों तक जज रहे हैं टैक्स बेंच में, मैं भी 1-2 बार अपियर हुआ उनके सामने। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और टैक्स के सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट जज है इस कंट्री में। उन्होंने टीडीएस का, जो भारतीय सेल्युलर का टीडीएस वाला फैसला ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए लिखा था, जहां कमीशन ब्रोकरेज का झगड़ा था बहुत तगड़ा। तो उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ बनाया कि ऐसा क्यों लगता है विभाग को, सीबीडीटी को, कि हर एक चीज टीडीएस में आए और नहीं आए तो जीवन मरण सब टीडीएस में ही हो रहा है, और जीवन का शुरुआत भी टीडीएस में और जीवन का अंत भी शुरू में, जबकि टीडीएस तो जर्नी का बिगिनिंग ऑफ द रोड है, एंड ऑफ द रोड थोड़े ना भाई साहब। अच्छा, ये अप्रोच डिपार्टमेंट फॉलो नहीं करता है। 194 क्यू वर्सेस, ये तो ब्रॉड प्रिंसिपल कोर्ट में जाकर, आईटीटी में जाकर या हाईकोर्ट में जाकर अप्रिशिएट होते हैं। जब डिपार्टमेंट 201 की डिफॉल्ट असेसमेंट करता है, वहां तो वो ओरल हियरिंग और शोकॉज नोटिस ढंग से नहीं देता है, वो ये बताने को भी राजी नहीं होता कि आपका डिफॉल्ट क्या है। और पोद्दार साहब, मैंने एक बात बोला कि वैकेरियस लायबिलिटी इनडायरेक्ट है। अगर आपने किसी में टीडीएस नहीं काटा और दुकानिया जी सामने वाला आदमी रेगुलर पेयर है, इनकम टैक्स पेयर है, वो रिटर्न फाइल करता है, तो No आप loss to me. क्या क्या जीवन मरण हो गया क्या भैया, उसको ले ले लो, उसे और सेक्शन में लिखा है 190, पढ़िए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एक एक्सप्लेनेशन है कि आपको लिखा है लॉ में कि आप टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिडक्टर के पीछे सारे हथियार लेकर पड़ जाओगे, सब कुछ लेकर हाथ धो के उसी के पीछे पड़ जाओगे। डिडक्टी अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, ऐसा कहते हैं ना। पिक्चर बाकी है अभी दोस्त, पिक्चर खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। वैसे भी इनकम टैक्स लॉ नया आ रहा है, पिक्चर बाकी है। तो 194 क्यू जीवन का अंत नहीं है सर। हमारे विभाग को लगता है टीडीएस काटना जरूरी है सब चीजों में, और सेक्शन बन गया है, काटिए भाई साहब। देखिए, एक और बात बता देता हूं, हमें ये सिखाया गया है, डोकानिया जी, एक और बात बोल देता हूँ कंप्लीट, कि किसी ने कहा, बड़े विद्वान व्यक्ति ने, बड़े सीए ने, दालमिया जी, जो जब सीए कर रहे थे हमारे प्रिंसिपल ने, कि साहब जब भी आपको डाउट हो विशाल भाई, तो टैक्स काट लो, अगर आपको 7.5 शनि भगवान की नहीं लगानी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो सब बातों का उत्तर मिल गया भैया डोकानिया जी। Yes. जिसको लिटिगेशन जाना हो लिटिगेशन में जाए, जिसको टैक्स काट के अपनी आत्मा को शांत रखना हो टैक्स काटे, और जिसको 119 में सीबीडीटी से क्लैरिफिकेशन लेनी है वो ले, और जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली जुडिशियल रिव्यू में जाना और कॉन्स्टिट्यूशनल वायरस चैलेंज करना हो पोद्दार साहब, वो करे, और पोद्दार साहब की सहायता ले। पोद्दार साहब बढ़िया 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 हमारे भाई हैं बड़े। मैं तो आजकल डाकनिया जी ज्यादा काम करने में इंटरेस्टेड नहीं, मैं तो एकेडमिक्स पे और बाकी बिहारी के नाम में इंटरेस्टेड रहता हूँ, और मेरे को काम 148 का ऑलरेडी इतना हो चुका है, मैं परेशान हो चुका हूँ इनकम टैक्स की लिटिगेशन से। पहले कैविट लगा दूं, क्योंकि मेरे को लोग कहते रहते हैं आप काम क्यों नहीं ले रहे हो, मैं पहले बोल दिया सर, कई जगह बोल दिया अभी। हाँ, वैसे क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर कर दूंगा, मुझे जितना कम आता है, बट उसके बाद विशाल भाई अतरा राधे राधे। क्यों जी Sir, अविनाश भाई? last question is there. If time permits, kindly highlight provisions and changes related to MSME and crypto assets as highlighted in the budget. सर देखिए, एमएसएमई का तो मुझे ज्यादा अभी समझ में कम आया, उसमें कुछ उन्होंने उसका टर्नओवर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भाई 2 पॉइंट और 2.5 पॉइंट बढ़ाया, इतना मैंने बजट स्पीच में पढ़ा था रट्टा मार के, 2 पॉइंट और 2.5 गुना, ऐसा कुछ किया है अविनाश भाई, कंट्रोल एफ करने से मिलेगा। वर्चुअल असेट का ऐसा किया है डोकानिया जी, इनकम टैक्स एक्ट में ब्लॉक असेसमेंट जो लास्ट टाइम 2024 में आया था, उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट को अनडिस्क्लोज इनकम में डाला है। हाँ, और एक सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सर ने पूछा, क्वेश्चन आई अप्रीशिएट, 285 डबल BA में एक रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करिए रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए, कि जो भी उनको 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 सबका लेखा जोखा चाहिए। लेखा जोखा समझते हैं ना आप, कि जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है तो गवर्नमेंट को, डालमिया जी एक सेक्शन डाला है उन्होंने, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का था एनुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट विशाल जी, ऐसे 285 BAA में रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट किया गया है वर्चुअल एसेट्स के संबंध में। और वो कंप्लायंस किसको करना होगा प्रमोद भाई? वो उसको करना होगा जो एंटिटी होती है, जो भाई साहब मैं देखो, मेरे को क्रिप्टो करेंसी नहीं आता करना, वरना। पर उसमें लिखा क्या है, 285 डबल BA पढ़ेंगे, उसके अंदर जैसे एनुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो लोग फाइनेंशियल एंटिटीज करती है बड़ी बड़ी, ऐसे इसको भी करना है। और उसको करने के बाद आप प्रिपेयर्ड रहें कि आपके ऊपर बहुत सारे नोटिस आ सकते हैं। वो उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए ना, जैसे इनसाइट पोर्टल पे, ऐसे कपिल गोयल जैसे वकीलों के लिए मैंने कहा कि सर, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी सर, राधे राधे, और बाकी बिहारी की सर।
मेरे को आज भी अविनाश पोद्दार साहब आज भी 148 के उस जजमेंट जो प्रोनाउंस किया तो जज साहब कह रहे हैं कपिल गोयल के 148 का किंग है। मैंने कहा सर आप मुझे क्यों ऐसे जोक करते रहते हैं माय लॉर्ड। मैंने तो 148 नहीं बनाया और मैंने तो कहा भी नहीं है कि ऐसा 148 यूज हो। डिपार्टमेंट को चाहिए कि 148 को सेंसिटाइज करे, अकाउंटेबिलिटी लाए। अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं आती हमारे यहाँ? हम सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ग्लोबल बेस्ट टैक्स प्रैक्टिसेस की, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं होती सर? देश के 3 पार्टीवाला साहब जैसे जज जेबी पार्टीवाला साहब, उन्होंने बीवी नागरत्ना मैडम ने और पीएस नरसिम्हा ने 3 फैसले अलग अलग लिखे अविनाश जी, जिसमें अकाउंटेबिलिटी की ब्यूरोक्रेट्स की बात करी गई है। एंड आई वांट दैट यू शुड आल्सो रेज दिस इशू अविनाश भाई कि दैट ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी शुड बी ब्रॉट इन टैक्स लॉज आल्सो। When you are bringing taxpayers to all corners, why not the bureaucrats and tax officials for their accountability is being checked up? When the great Supreme Court judges, ये तीनों वो जज हैं जो देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे आगे, और मैडम भी बनेंगी, नागरत्ना मैडम भी, नरसिम्हा साहब भी बनेंगे और पार्टीवाला साहब भी। और वो दिन आएगा तो मैं अच्छा मानूंगा डोकानिया जी, जिस दिन अकाउंटेबिलिटी आएगी। आप समझ गए मैं किस भावना से बोल रहा हूँ? हाई पिच असेसमेंट कमेटी बनाने से अकाउंटेबिलिटी नहीं आई सर कोई इशू। सेक्शन डालने से, स्टैट्यूट में अमेंडमेंट करने से और उसको इन्फोर्स करने से तभी बनेगी पोद्दार साहब, और तभी टैक्स पेयर चार्टर होगा। पोद्दार साहब आप कुछ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं सर। Yes, sir, it was comprehensive enough. I think we can take it ahead. Yes, sir. So Kapil ji, thank you on behalf of Ashwa Legal for joining this session and providing your valuable insights to all the participants. I think the comments that we are seeing on the chat box. बोले थे सर मैंने, एक भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड 462 ITR और एक एली लिलियन कंपनी 312 ITR सर। Yes. Please reply to my query. ये महेंद्र जैन जी क्या पूछ रहे हैं, बोलिए सर क्या है, बताइए इनका कौन सा क्वेरी सर? Religious trust filed, I think this is not related to budget, but I think we can. Religious trust filed Form 10 after 365 days of assessment year 18-19. And सर they सेक्शन came. जैन साहब नोट कर लीजिए महेंद्र भाई अपना, आप मैं आपको प्यार से समझा देता हूं। अभी तो गुजरात हाईकोर्ट के सबसे अच्छे ऑर्डर आ गए जस्टिस कारिया साहब के, और अविनाश भाई भी आपको इसमें और हाईलाइट कर देंगे। बाकी सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी नोट कर लीजिए। 2 हाईकोर्टों के सबसे अच्छे ऑर्डर आए बॉम्बे और गुजरात के, कि आप सीबीडीटी के पास जाकर इसका कंडोन करा सकते हैं कंप्लायंस का, और सीबीडीटी अगर नहीं मानता है तो फिर आप हाईकोर्ट में रिट में आ सकते हैं डोकानिया जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपसे कोई कंप्लायंस में लेट हो गया जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट का या 10IC का, 10IC का बहुतों से हुआ है, 10B फॉर्म का हुआ है, तो उसको गुजरात हाईकोर्ट ने स्पेशली सबसे ज्यादा लैंडमार्क ऑर्डर्स दिए हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। एक जैन समाज का केस था, एक और केस था, एक 10IC का था, एक 10B का था। तो उसमें गुजरात हाईकोर्ट का ओपिनियन यही था कि अगर 10B फॉर्म या फॉर्म जो पर्टिकुलर है वो बाद में आगे पीछे फाइल हो गया और सब्सटेंशियली कंप्लाई कर दिया आपने कानून को, तो उसके डिलेड कंप्लायंस की वजह से आपका बेनिफिट नहीं छीना जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला है। पर उसके लिए आपको यात्रा क्या करनी पड़ेगी, रेमेडी क्या है? 119 में सीबीडीटी को पेटिशन लगाइए और उसके बाद हाईकोर्ट जाइए अगर सीबीडीटी नहीं मानता है। दैट इज आंसर। आज ही हमारे केस में किया है सर 80IC में। तो आई एम राइट सर? हाँ बिल्कुल सर, गुजरात हाईकोर्ट ने 192 भी हालांकि सीबीडीटी करता नहीं है, पर उसमें नहीं जैन साहब आपको फिर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट करेगा, आपको थोड़ी सी कष्ट करना पड़ेगा इसमें कपिल गोयल, और आप कुछ नहीं कर सकते। माइंड मैंने आपको क्या कहा, आप तो अपना कर्म कर सकते हैं, सीबीडीटी को लगाइए और सीबीडीटी को कोशिश करिए परसुएड करिए। परसुएड समझते हैं? हमारे कानून में बोलते हैं परसुएशन बहुत वैल्यू रखता है। फिर नहीं मानते तो हाईकोर्ट जाइए, मालिक मरता क्या नहीं करता। Please record case law of deletion with retrospective. Vatika Township 367 ITR 466 Justice A.K. Sikri. That there are 2 types of amendments, जिससे एक तो बर्डन बढ़ता है, एक से कम होता है। जो एम्यूलेट करती है, जो रिलीफ गिविंग होती है, उसको प्रिजम्पशन होती है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव है। दैट इज वाटिका टाउनशिप 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट 367 ITR 466 बाय जस्टिस A.K. Sikri। और वो भारतीय सेल्यूलर वाला तो केस लॉ अविनाश भाई सबको पढ़ने लायक है। 462 ITR टीडीएस के जो भी विक्टिम लोग हैं ना, और ये जो सीबीडीटी का 119 का गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस कारिया ने ऑर्डर्स लिखे हैं, सबसे बेस्ट ऑर्डर्स हैं। मैं कुछ ऑर्डर हैं 1-2 आपको भेज दूंगा, आप इनको दे दीजिएगा। ठीक है डोकानिया जी? Thank you, sir. Thank you very much for joining today. And थोड़ी देर हूँ सर अभी मैं दल में, आपको अविनाश भाई की मैं 5-10 मिनट में मैं अभी। yeah, sure, sir. You're most welcome to be here. Thank you, Kapil ji. Thank you sir.
All right, sir. So moving on to our next session on indirect tax, we have CA Ashu Dalmia ji, who is our partner and based out of Delhi. Certainly a very good name in GST and renowned author in many books, has been part of indirect tax committee as well as been part of the VAT regime implementation in UAE. So I think Ashu Dalmia ji has been a very renowned speakers in many seminars and conferences as well since the time GST has been implemented. So with that brief introduction, I hand it over to Ashuji to take over the indirect tax proposals in Finance Bill 2025. Over to you, Ashu. Thank you, Pramod bhai. First of all, Vishal, Shafali, Avinash, thank all of you. And कपिल जी को सुन के कपिल जी काफी डायनेमिक तरीके से बोलते हैं और प्रैक्टिकल होके बोलते हैं. जो आज का हमारा डिस्कशन का जो पर्पज है वो बजट प्रपोजल का है. और अगर हम जीएसटी प्रपोजल की बात करें तो बहुत ही कम अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं. क्लॉज 116 से लेके 129 14-15 अमेंडमेंट्स हैं. और ये सारे अमेंडमेंट आप देखेंगे तो 55th जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ऑल दीज अमेंडमेंट्स हैव बीन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हैज कम हियर. इनको हम एक एक करके करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चेंज आया था फाइनेंस एक्ट 2024 में, दैट वाज रिलेटेड टू इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन आईएसडी स्कीम. फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले आईएसडी वाज देयर. आईएसडी के अंदर रजिस्ट्रेशन भी था, बट फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन को कंपलसरी बना दिया गया. उसके लिए दो रिलेवेंट सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को डिफाइन करता है, एंड सेक्शन 20 जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में टैक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये बताता है. फाइनेंस एक्ट 2024 में बेसिकली व्हाट हैपेंड, 2 सेक्शन क्लॉज 61 और सेक्शन 20 को इस तरह से अमेंडमेंट किया गया कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन हैज बिकम कंपलसरी एंड दैट हैज बीन मेड कंपलसरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आईएसडी की कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं तो 1 अप्रैल 2025 से मेरे को उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरीली, और आईएसडी मैकेनिज्म के हिसाब से ही अपने यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा क्रेडिट्स का. फंडामेंटली आईएसडी का मतलब क्या है? आईएसडी का जो मतलब है वो ये मतलब है, ये एप्लीकेबल होगा सबसे पहले ओनली फॉर सर्विसेज, और ये अप्लाई होगा जहां पर मेरे मल्टीपल ऑफिसेज हैं, मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है डिफरेंट स्टेट्स में, और मैं कॉमन जगह पर बाकी जगह के लिए सर्विसेज अवेल करता हूं. फॉर एग्जांपल मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज ली मेरे बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई में. वी हैव द ऑफिसेज. Okay, we have the, I think, audience from all over, so I will take in English only. So basically, what is the ISD mechanism? When I have the multiple offices or multiple GST registration across the country in various states, and I am availing the services in centralized manner. What this means? For example, I have taken the AMC from a computer service agency where the bill are coming in my Delhi office, but the services are being availed at across various part in the country. I am availing the security services where the bill is submitted in my Delhi office, but security services are being availed in various offices. So before the amendment of Finance Act 2024, what was happening? People were adopting cross charge also, and people were adopting ISD also. In cross charge, what is happening? That cross charge basically, if we see, that is not defined in the law, but when we are issuing the invoice under section 31, then the cross charge was done from one branch to another branch. But after amendment of Finance Act 2024, if you are falling into ISD category, then registration is compulsory and you have to distribute the credit through ISD mechanism as per section 20 of the CGST Act. Now, what is the change in Finance Act 2025? Basically, in Finance Act 2024, ISD has become compulsory not only for the forward charge but also under reverse charge. If we see the definition, the reverse charge
basically is under IGST Act and for CGST Act. That means if I'm taking interest rate supply, there can be reverse charge. If I'm taking interest rate supply, then there can be reverse charge. In Finance Act 2024, only interest rate supply was covered. That means section 5.3 and 5.4 was covered. Now, after the basically 9.3 and 9.4 of the CGST Act was covered. Now, in Finance Act 2025, if even the reverse charge services are being availed as interest rate services, then it will be covered under the ISG mechanism, and the credit has to be distributed only through ISG mechanism, and that will be effective from 1st April 2025. So what is the key point here that has to be kept in mind as a compliance point of view? Number one, what I have to cross check whether I am availing any services which is used by basically at various branches and for which I am getting a centralized billing. In that case, the ISD registration has to be there. I will keep one question open here that we can discuss later on. For example, I am generally everyone is getting the audit services, or let's say some company, listed company, various services for the listing purposes. They are getting the listing services for the purpose at their head office or the corporate office. So even for the audit or some accounting purposes, whether I will be covered into ISD mechanism, if that is the situation, I think no one will be left out from the ISD mechanism. So that we can discuss later on in panel discussion, that we can take it. Pramod, you can note down that thing. If the question comes, then it's fine. Otherwise, you can take it forward that way. Now, second amendment, that is a very fundamental amendment, and it is in the direction like Kapilji was also discussing. There is no trust. There is no trust factor on the businesses or somewhere. So somewhere the inspector is coming back. Clause 116A. Basically, that is a track and trace mechanism. Like in an excise, there was inspector eye, register was kept, and everything was entered into those register. Now it will be a different way. It will be electronic way, where the some goods there one introduced 2025, where the certain category of the goods or certain class of the persons can be notified, where they will be required to put the unified, basically they say unique identification marking system. That means they will provide who will do that thing. There will be some certain agency who will be installing that unified identification system. Here the government will notify what are the goods, what are the class of persons who have to do this thing, and most probably cigarette or some like those things will be covered into this category. No, that has to be notified, but that see how it will going. But it will be basically 100% track movement will be there. It is not only for the supplier; it will be anywhere where these goods can be used or stored. Even those locations that scheme may apply, and for that purpose, if that is not done, penalty provision has been also introduced in section 120, basically for violation of section 148. Then one change is in section 34. Basically, if we see the section 34, the supplier of the goods and services can issue a credit note under section 34. When the credit note can be issued, there are certain situations when the credit note can be issued. If the goods have been returned, services have not been availed, there is deficiency in the goods or services given, or the taxable value of tax has been, there is some difference, then the supplier can issue the credit note. If we see the conditions of section 34, the condition was you have to take it within certain time frame, and you have to issue the credit note. Now, go to the section 15 that talks about the valuation. If we read it, section 15, subsection 3, I'm just reading clause 3B sub clause 2. Input tax, what it talks about, the value will not include discount if the input tax credit is attributable to the discount on the basis of discount document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply. That means section 15.3, there is already condition. Discount will not be included in the value only if the recipient has reversed the credit. But there was no
mechanism for that to be implemented, and for that purpose, Section 34 has been amended, whereby the reversal of, because what happens in credit note, supplier issues a credit note, he reduces his output tax liability, and the recipient reduces the input tax credit. Now the additional condition has been inserted under Section 34 that is proposed. The reduction in output tax liability will be available only when the recipient has reduced the input tax credit. That means the output tax reduction will be dependent upon the reduction of input tax credit by the recipient. So basically, this will increase a lot of burden on the assessees or the taxpayers, ki how they will match if tax has been reduced or not reduced. The IMS facility is there, but practically how it will go or how the compliance will be done, that has to be seen that way. Then a major change in filing of appeal. In GST, we can file appeal to the first appellate authority if we are not satisfied with the adjudication order under 107 to commission appeal. And excuse me. We can file appeal to the first to the commission appeal under 107. And if we are not satisfied with 107 order, then there is a provision to go for the appellate tribunal under Section 112. No, 112 is not operational right till now. Now, what was the provision under Section 107 originally? If you are going for the appeal, you are required to pre-deposit 10% of the disputed tax amount and 100% of the agreed tax. Initially, there was no requirement to deposit the penalty amount. Then the in-between brought in the change, whereby if the order has been passed under Section 129, 25% of the penalty has to be deposited, has to pre-deposited for going to the appeal under Section 107, but no corresponding provision in Section 112. Now, what the change has been brought into Section 107 for filing appeal to the first commissioner appeal. If the order is penalty order, that means there is no tax. If there is no tax into the order, then the 10% of the penalty amount has to be deposited, pre-deposited before going to the appeal. And for 112, again, further 10% of the penalty amount has to be deposited before going to the second appeal to the tribunal. What we have to keep in mind, I am just reading the language of Section 112. Provided that in case of any order demanding penalty without involving demanding tax of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to 10% of the such penalty has been paid by the appellant. That means if there is no tax amount involved in the order and we are going to the appeal, then the 10% penalty provision will be applicable for the pre-deposit. If the order involves only penalty, then only we have to deposit 10% of the penalty amount for the filing the appeal, before filing the appeal. Then there is a one change in Schedule 3. Basically, Schedule 3 talks about certain transaction which will not be treated as goods, supply of goods or supply of services. That means they are out of the GST. And this amendment they have brought in retrospectively from 1st July 2017. What is the change? If the goods has been stored in a special economic zone and free trade zone, and they are supplying before clearance of the export or for domestic tariff area, then that will not be treated as supply of goods and services. And this will be effective from 1st of July 2017. The other condition they have put in, if someone has paid the taxes on such transaction, then refund will not be allowed. But consider one situation where I have paid the taxes. Now
this has become non-taxable, no supply with effect from 1st July 2017. What will happen of the ITC which I have taken? Because on one side, the law is clear, refund will not be granted. But what will happen if I have taken the ITC because I have paid the taxes on certain transaction, or I have stored the goods in SEZ, and before clearance for the domestic tariff area or for the exports, I have supplied. Then, in that case, I paid the taxes on the transaction and I have taken the input tax credit. But now the government has said it will not be supply from 1st of July 2017. If it is not the supply, then I am not able to take the input tax credit on those transactions, which is not the supply. Refund will not be granted, but what I feel, if I have taken those transactions as a taxable transaction, I have utilized the input tax credit. On the one hand, refund will not be granted. And what will happen of the ITC? I think the notices has to surely come. What will the fate? That is a different part. But ITC will be the challenging, whether we can take the ITC or we cannot take the ITC for that. Now, another important change has come in definition of plant and machinery or plant or machinery. Just we try to understand what is the background. Basically, if we see the 17.5 of the CGST talks about the block credit. कि कौन-कौन से ITC हमें नहीं मिलेंगे. उसके अंदर सेक्शन 17.5 क्लॉज C and clause D, ये दो important clauses हैं. Just I am reading out, then we'll discuss it. Where the gap was there or what was the Safari judgment, and to overcome that judgment, amendment has been done. 17.5C talks about works contract services when supplied for the construction of an immovable property other than the plant and machinery, except when it is input services for further supply of works contract services. That means section 17.5 clause C is applicable when works contract services are supplied for the purpose of construction. And there are two exceptions. The first exception is it should not be plant and machinery. If it is a plant and for the plant and machinery, the credit will be available, and it is not for the supply of works contract services. That means if I am taking from my subcontractor, then the main contractor may avail it. 17D talks about the goods and services received by the taxable person for the construction of immovable property. अभी मैं exception पे नहीं जाता हूँ, just I am discussing it. 17D कहता है कि अगर immovable property के लिए if you are using goods and services, then the credit will not be allowed. In Safari Retreat, what happened? The assessee was building a mall and he was using the goods and services for the construction of that mall, and on that input tax credit was accumulated. Now coming to exception of 17.5D. Taxability के point of view से, ITC block के point of view से, what the section 17.5D, if the goods and services are used for the construction of immovable property, what are the two things? There are goods and services and which are used for the construction of immovable property. That means if the property is not movable, then the clause 17D will not be applicable. D will be applicable when it is for the construction of immovable property. There are two exceptions to this. First exception is if it is not used for plant or machinery. Just keep the things in mind. 17C talks about plant and machinery. 17D talks about plant or machinery. दूसरा exception है if the such goods and services are used for own account, then the restriction will not be applicable. So that means there are two exceptions of 17.5D. When it is for the purpose of plant or machinery. Number two, when it is used for own purpose. इसको अब हम डिस्कस करेंगे what is own account, what is for that purpose. And section 17.5 explanation talks about plant and machinery. What the Supreme Court held in this judgment, we have to see the functionality judgment, because plant and machinery, when we say plant and machinery, when we say plant or machinery, both cannot be equated. What the Supreme Court held, the legislator intentionally kept in 17D plant or machinery, not the plant and machinery.
Supreme Court distinguished between plant and machinery and plant or machinery and held if something is plant, then the 17.5D will not be applicable. That means the restriction will not be applicable. And whether certain thing is a plant or not, the Supreme Court talked about the functionality test. And for that matter, the Supreme Court referred matter back to the basically Orissa High Court. So what the challenge came before because of the decision, if anything which is building or something like that which is used for the purpose of further businesses can fall into the category of the plant. To overcome that judgment, the government has come with the retrospective amendment saying 17.5D will be plant and machinery, not the plant or machinery. And second explanation they have inserted into the amendment, if any judgment or any order, plant or machinery has been discussed as a plant or machinery, that will be taken as plant and machinery only. So what is basically the purpose of this judgment? To overcome the outcome of Safari judgment. But here the second leg is open, because what is the, if we initially I read 17.5D has two exceptions. The first exception is plant or machinery. Now they have amended it retrospectively from 1st of July 2017. The second exception was if this goods and services used for the construction of property has been used on his own account, then it will not be basically restriction. Now, the Supreme Court has defined in the Safari judgment what is the purpose, how you will decide whether it is a own account or not account. Just I am reading it what the Supreme Court had held here. This is basically para 32 of the judgment. Second exception is where the goods and services both are received by the taxable purpose for the construction of human property made not on his account. Construction is said to be per taxable person's own account, where it is made for personal use, not for the services. It is to be used for the person constructing as the setting in which business is carried out. However, the construction cannot be said to be personal own account if it is intended to be sold or given lease or license. That means 17.5D, second exception is if I'm not constructing it for my own use, then I'll not be falling into 17.5D. So what the government has done by amending the plant or machinery clause to plant and machinery, overruled the judgment of Safari judgment. But what I feel even after this judgment, still there are hope, or we can discuss in panel also that way. If it is not used for his own account, then even the second 17.5D will not be applicable, and we can take further whether ITC available or not available for that purpose. So these are the few changes that was introduced in the budget. I think these were the only changes. Otherwise, just administrative, I am not discussing that. So better we can take a discussion, and if we have some questions, we can take those questions. Yeah, I think there are many questions on ISD. I'll start with, it says from Mr. Venugopal Villa, section 2 subsection 61 say ISD to pay RCM. सर जी एक चीज बताऊं, वेणुगोपाल जी को तो सामने लाइए, वो आज नहीं हो तो बताएंगे वेणुगोपाल जी तो. Yes, sir, चलेगा. I will mute him. He should join us in panel. Yeah, it's now. Everybody will be getting some advantage. Yes, sir, please. Yeah, so let's discuss these questions and let's have different views. Yeah. Should I read or? Yeah, please, sir. Maybe you can also start your video. No. I am little outside. I will just join in video in person in a while. So I actually want the views of others also. This is something which are, I feel between the GSTN and the law committee who is making the law, there is a gap. Because if the
2 subsection 61, it says ISD has to pay the RCM. While the section 20 subsection 2 says the payment has to be done by distinct person and not the ISD. Form GSTR 6 do not have the mechanism to pay the RCM in cash. Now, if the ISD has to distribute the RCM credit, the distinct person would be making the payment and doing a cross charge of this payment to ISD, which ISD will distribute it. Now, if we are saying that the distinct person is doing a cross charge, which is otherwise ISD has always been taking the credits of all the forward charges which it is getting and segregating it as eligible and ineligible, and it is been distributing. So technically, there was no requirement of making an amendment in last year and specifically saying that from 1st April 25. These are my views. Hope Ashubai, you're clear with the question. Yeah, that's the point, because if you see the initial 2016 discussions, they have not brought in RCM provisions by way of thought. Now, what they are saying, if we see, if I read the section 20 subsection 2, just for the benefit of all, I am just reading it. What the Venu Bhai is saying: the input service distributor shall distribute the credit of the central tax integrated tax charged on the invoice received by him, including the credit of the central integrated tax in respect of the services subject to levy of tax under subsection 3 or 4 of section 9, paid by the distinct person registered in the same state as the said input distributor in such manner within such time and restriction as may be prescribed. Hello. Hello. हाँ अशोक भाई क्या हुआ? Venugopal sir, does that answer your query? Venu bhai. Acha, I am unable to unmute. Okay. I will ask him to. Yeah, Venu Bhai. Yes, sir. Yes, sir. This is where I'm saying I think there is a procedural lacuna and some clarification has to definitely come from the Yes. GSTN. Now, the GSTN also issues clarifies, and I am wrongly using the word that GSTN has to clarify. Ideally, it should be CBSE who has to clarify. Okay. Yeah, Pramonji, you can go for the next. What it is? So the next question is on the section 34 amendment, which is of credit note. Now the IMS has introduced a mechanism where the reversal of the credit note, when I say reversal, it is rejection of the credit note by the recipient. Yes. Has to be paid by the supplier as output tax liability in the subsequent month of the rejection. मान लीजिए in December credit note, the recipient has rejected in December, then January it gets added. Or if the recipient is rejecting it in February, it gets added in March as a output liability to the supplier. But nowhere in the law there is a mechanism which is mentioned of interest related liability for this. Who has to pay? Technically, recipient is saying that my credit is intact, I will not reverse. And supplier has now, let's say, has reduced his liability for 2 months, 3 months. Law is silent on the interest. So what do you think on the applicability of the interest? Hello. Vinu, what I think is section 15 subsection 3 is very much clear from the very first day. Reduction of output tax liability is dependent upon the reduction of input tax credit. 15.3 is only for the
the discount related. But imagine of a sales return, the other valid credit notes. I'm not talking about discount, other valid credit notes which are issued under 34, probably a sales return or reduction in the value. There was a wrong amount charged and it has been reduced later. So For only that, discount Vinay, I related, think I the agree the document interest, but itself will other be things are important to see. silent. Hello. Vinay, Is what my we voice low? see in that way, because there is certain underlying document for anything. So what will be the important, what is the document date, and whether that document was valid or not, and from that the interest stability can be determined. And how the system will do, that's a different part. But system has not been defined. So look, I am talking Yes, about a there is no sales system, return and scenario. that's I told. There is Yeah, no sales system for return that purpose. scenario or reduction in the value, erroneous liability which has been paid and reduced. Or supplier is recipient is saying there is a deficient in the quality of the goods, and he says he will not make the payment. So I Because think that in how the some system cases will the interest see becomes that. loose. So it is subjective to the officer to determine. So next point on the penalty pre-deposit. The Yeah. penalty pre-deposit, I am presuming that it will easily take next 6 months Yeah, for it the will take. amendments to come. So maybe in the August we should be cautious of filing of all the appeals, because till this comes in, the appeals can be filed without the pre-deposit of the penalty, and this cannot be a retrospective. So this No, is this just is from not academic retrospective. This level. is not retrospective. This will be Correct. notified, then it will be implemented basically. That is Yeah. the tool. And the last question is on 17(5)(d). So in case of 17(5)(d), I'm talking about situation where users have availed credit, taxpayers have availed the credit, but not utilized. They're parked in the electronic credit ledger. I'm saying till financial year 2021. Today, they assuming in financial year 24-25. So in March 25, they're utilizing this credit. Now the government has said retrospectively, this is an ineligible credit. Now I have availed an ineligible credit in 17, 18, 18, 19, 19, 20, those years, but I'm utilizing in the current year. When I'm making a utilization of this credit in the current year, I am of the view the department has no ground to make a demand for this utilization, because the notice has to be issued under 73, not 74, or demand has to be under 73, because this is a matter of interpretation. So those SSEs who have availed the credit and parked it and chalo kuch hua to litigate karenge, taken that risk, are still beneficial in my view. Even though this is a retrospective amendment, I think there is no tooth for this amendment. And then given that this is retrospective, it can't be 74 case, it has to be 73 case. So what do you feel? Yeah, you are correct. Basically, 74 cannot be invoked when there is a change in the law retrospectively, or there is some amendment has been done on the court law cases. That is there. But practically, if you see, if the timelines are approaching, they are issuing 74 notices. Obviously, they are being quashed by the court only. Yeah, But so that cannot be the case of the 74. section can be see, on merit. I know that I am ineligible. I'm not denying it, but the section they can use is 73 and not 74. So my preface would be that the section has been wrongly used. So if it has automatically changes to 73, then the time limit to make a demand or order gets completely quashed. Yeah, because if you get the order, Avinash Pai is there, it will help out. Exactly. Maybe Avinash Bhai, your views also on this point.
these are my questions. So sorry. Avinash ji, Avinash आपका bhai, you are to be unmuted. Venu bhai, I think this is a very apt question that you have raised for 17.5D, because majority of the taxpayers, they have availed the credit but not utilized. Now it is being retrospectively amended. Obviously, the time limit for issuance of notice for 73 for a couple of years have lapsed. They will not be in a position to issue the notice under 73. So what alternate they have for 18, 19 onward, they will issue a notice under section 74. We'll be pleading that 74 notice cannot be issued because this is an interpretational issue or anything like that. The question is, what about those credits which have been availed and now being utilized after the amendment, or maybe after 2021, the credits are being utilized? Can the department ask for reversal of those by way of issuance of a show cause notice? Yes, it apparently seems to be they will not be in a position to demand those credits which were availed in 17, 18, 18, 19, 19, 20, 2021, whichever years have lapsed the time limit for issuance of show cause notice. Certainly, I agree with this. But let us take it for the sake of argument. I prima facie I agree, and this will be the prime argument, obviously. But let me take it in a different fashion. They are not in a position, or rather, they cannot collect a tax which was never a tax. We always plead this. For example, leasehold rights. Now, after the order of the Honorable Gujarat High Court, let us presume that it attains finality. Nobody challenges it. So many of the people have paid taxes on the transfer of leasehold rights. So what we are suggesting that it was never a tax, because the High Court has said that the tax cannot be levied or GST cannot be levied. So if it was not a tax, then obviously you ask for a refund. You will be getting a refund for that. If you have passed on this and the recipient has not availed the credit, then the recipient can avail refund of it. Now, question arises, what is the jurisprudence? Time limit for claiming refund of 17, 18, 18, 19, 19, 20, those were never stayed by any courts. The time limit has lapsed. After this order, on the basis of this order, we'll be claiming those refunds, saying that it was never taxed. However, we have paid this as a tax liability. Therefore, you cannot retain it. It will be violative of Article 265. Similarly, tomorrow a view may be taken that although the time limit for 73 has lapsed, but at the inception itself, it was never a credit which was eligible. It was never a credit itself. It was a blocked credit which you have availed. And therefore, you need to pay it off. Certainly, the department has no tooth. The law has no teeth as on date. So primarily, they will come out with some amendment saying that because of this retrospectivity, whosoever has claimed that must be reversed or must be repaid. That is what I can understand, because this question which you have raised has been raised by many people, and therefore I am of the view that department may come out, or the board, or maybe the council will come out with some enlightenment on this, and they may change the law qua this by way of a proviso or something like that. This is what it can be the future, like we can foresee in future. This is what I presume. But yes, I agree with you that certainly it is not possible. They cannot ask for the amount to be paid back because of the time limit. So certainly it is a section 73 and it can never be demanded back. Yes, Ashu bhai. Okay, I think there's few more questions. Amendment to warehouse rules. Are we to write back the ITC and also pay interest and penalty due to retrospective legislation?
So where the question I can read it basically. Amendment to warehouse rules. Are we supposed to write back the ITC and also pay interest and penalty due to a retrospective legislation? They may come out there, like Avinash bhai told for 17.5D. It is a case here also. The board may or may come out with certain thing because I have legitimately paid the input output tax credit and I utilize the input tax credit. On the one hand, you are not refunding my output tax. So I think that will not be justifiable. You are not refunding and asking me to refund the to reverse the ITC for that. That will matter of litigation that way. Okay. Then I think Pankaj Agrawal ji, can the para referred be said to be ratio decidendi as Supreme Court itself did not gave its verdict based on it? Maybe it's a Pari retreat case or something. Right. Avinash bhai, you can explain better way what the question. I have used the para 32 of the Supreme Court judgment. So what the question is, whether that can be the ratio for the judgment. Basically, what I have pointed out here, in this para, the Supreme Court has defined what is the exception to 17D. And in that exception, one of the exception is if it is not own account, construction is not own account, then it will be out of the exception to the block credit. But in final decision, that has not been discussed, what I feel. Others may correct me if I'm wrong. So whether that can be used as a ratio. Even if it is used as a ratio, what remains? Once it is turned down by the parliamentarian, I don't think anything remains because we cannot argue it further. Although I'm surprised because there is also a review filed. The review has already been filed for Safari Retreat by the department, by the government. So let us see, because now the review is going to be heard, and if it gets listed and maybe it gets reversed because of the multiple acts wherein it was never plant or machinery, it was always plant and machinery. So I personally believe that even if it is ratio decidendi, that may not help us now for pleading it, because law has already been proposed to be retrospectively amended. Therefore, see what we can do at the most. What I understand is my limited understanding. If it is getting detrimental to us by any ways, then certainly we can take a plea that something which was available to me by virtue of law, now because of that retrospective amendment, just to nullify a particular act will not sustain. There are judgments of Honorable Apex Court wherein it has been said that if something is done just to nullify the judgment of a court, which also causes a detrimental or places the public or the taxpayer in a detrimental position, that is not a good proposal, and therefore that retrospectivity which is causing detriment should go. So that can be argued certainly, but otherwise I don't think that anything will sustain now. Okay, next question is with effect from 1st April 2025, is it mandatory to distribute the common credits to branches, or is it a discretion of the HO to distribute it using ISD? Ashuji, you're on mute. Yeah. Finance Act 2024 made it as mandatory. If you have the ISD transactions, then it is compulsorily to be done through ISD mechanism, and that will be effective from 1st April 2025. When credit note is rejected, there is increase in liability in GSTR 3B, but what should be done in GSTR 1? Should we amend that credit note in GSTR 1 return as well? So basically, that will depend how your commercial transaction is. If the credit note is actually existing and your creditor has to accept it, if your transactions are like that, he is not accepting that, obviously, you have to amend in GSTR 1 also that way. Right. I have a ISD client, how to deal with RCM credit distribution. Please explain practical solution. So for this, basically, we have to wait, like Venu has discussed in detail, how the system they will develop
through mechanism that will be done. So till right now, there is no such mechanism for that. Do we need to take ISD registration for company having DTA and SEZ unit, and what will happen to ITC of SEZ unit? As a SEZ unit do not have output liability and will not be offset. Due to this, there is extra cost to the company in the form of blocked ITC. Sir, first of all, मैं फिर से I am repeating one thing again. For everyone, ISD will not be applicable. It will be applicable only when two conditions basically. You have distinct person. That means you have multiple registration having same PAN number. Having DTA and SEZ are distinct person. The first condition is met. The second condition is you should have availed some common services there should be some common services for which the bills are received at central place. In that situation, the ISD registration has to be taken. If these two conditions are fulfilled, even in the case of the DTA and SEZ unit, what I understand, the registration will be compulsory and ITC has to be distributed. Okay. Also, I want to highlight section 63 has little wrongly availed, has the title wrongly availed or utilized. I believe these words utilizes only for the cases where say tax to be paid in cash but paid in credit, or ITC not to be utilized as per condition in rates, and it is utilized only for those cases. We spoke about this again. Venu Gopal sir question again. I'll again read. Want to highlight section 73 has the title wrongly availed or utilized. I believe these words utilizes only for the cases where say tax to be paid in cash but paid in credit, or ITC not to be utilized as per condition in rates, and it is utilized only for those cases. In which reference Venu is asking? Venu, can you comment? Ask him to unmute. आई थिंक उस वक्त जब डिस्कशन हो रहा था 17.5 पे सफारी वाले पे, तब उन्होंने वो मैसेज लिखा था. Okay. Basically, I was saying the power to issue notice under 73, if at all they are taking a plea wherein 73 has this words utilized also. Now, the words utilized for 73 is not for these cases, is my view. Because like today, if someone has to say that my bank balance is 1 lakh, they cannot attribute this 1 lakh is towards which are the customers who has paid this 1 lakh. Same goes the balance which is there in my credit ledger. It has to be demanded. It has to be retrospectively gone back and demanded in the year in which I have availed, not the year in which I have utilized. Right. Yes. Got it. Next question is, what is difference between adding a newer section and inserting proviso through amendment? Proviso retrospective by default. Please give your guidance. What is the difference between adding a newer section and inserting proviso through amendment? Avinash ji. Avinash bhai, you're taking? नहीं आप लो. अच्छा. अशोक भाई. अमित जी, बेसिकली जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोविजो है देन इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिवली, और नया सेक्शन है देन इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिवली. ऑल विल डिपेंड हाउ इट हैज बीन इंसर्टेड. फॉर एग्जांपल सेक्शन 34, द प्रोविजो हैज बीन इंसर्टेड that the input tax ITC has to be reduced to reduce the output tax liability, and that will be notified in the future date. Similarly, the new section can be brought in depending upon, because the government has the power to bring brought in with effectively with from retrospectively. For example, SEZ provision and free trade zone provision has been inserted in Schedule 3 retrospectively from 1st of July 2017. So we cannot say in general what will be retrospectively or what is will be prospectively. It all depends the intention of legislature, how those has been brought in into the picture. I think that's all we have.
Avinash bhai, any comment from your end? No, if anybody has any question, then we can take it up. Yeah. If there is any more question, please feel free to post it on chat box or raise your hand. But one question, I think Venu bhai question is not addressed. Supplier issues the credit note, same has been rejected by the recipient, and the same gets added to output liability in the next month. Who will pay interest for this? No, that was discussed. It was okay. I missed it. I'm sorry. पर मुझे एक क्वेश्चन ये था कि अगर 3B में रिजेक्ट भी कर दी है लायबिलिटी क्रेडिट नोट की, देन व्हाट शुड वी डू इन GSTR 1? फिर क्रेडिट नोट को उसको अमेंड करें GSTR 1 में, क्या करें उसका? Yeah, that was also answered by Ashuji. Yeah. Okay. Shefali ma'am, if you want to take any questions further. क्वेश्चंस मोस्टली हो ही गए हैं सारे. No more questions are coming up. Ashu bhai, one question. This 1076 amendment, that penalty 10%. By any stretch of imagination, can it be retrospective? I don't feel because this is a situation of pre-deposit. If the appeal has been filed as per the existing provision, I don't feel that pre-deposit can be done after filing of the appeals, because the provision is for pre-deposit. Yeah. Okay. Should इसकी एप्लीकेबिलिटी, मतलब इसकी जो एप्लीकेबिलिटी रहेगी वो जब मैं अपील फाइल कर रही हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर डेट से हो जाएगा कि इसके बाद जो भी अपील फाइल होंगी सब पे आपको पेनल्टी का भी 10% देना पड़ेगा. ये पुराने ईयर का भी नहीं कर सकते ना कि आपने पुराने इन ईयर्स के लिए अगर अपील फाइल कर रहे हैं तो आपको 10% This will be what I feel this will be effective from a particular date. For example, 1st January 2026. So any appeal filed after 1st January 2026 has to be done if it is a penalty order only by depositing 10%. What I feel. What is your take, Avinash bhai? Yes, absolutely. Otherwise, तो ऐसा हो जाएगा कि like it will create a discrimination. Till 2024, whatever orders are passed, no pre-deposit whenever the order is passed. Yes. 30 में pass करेंगे तो भी नहीं, तो that is not permissible. Retrospective was many questions were there. Many people has asked from the day it was announced, budget was announced, whether it can. अच्छा question है practically यानी जी का. Sir, obviously, it is having a retrospective effect to some extent because the orders which are now going to be passed after implementation of this section, the impact is retrospective, obviously, but not on those matters which are already filed, appeals are already filed, or which are about to be filed before this notification comes. And as Venu bhai was saying, it will take 6 months to 8 months minimum because it is to be ratified by all the states. Then it will be notified. Because अभी काफी जल्दी भी कर रहे हैं because there are many situations wherein they have implemented immediately. They will issue a notification. Who goes and sees whether it has been ratified or not? But since it is a part of finance bill, it will take time. Avinash, my one point here is this becomes retrospective when the matter goes to the tribunal. Yes. When it goes to the tribunal, then it says the additional 10% penalty. So the Correct. first 10% was not paid. So that time it becomes, I feel it's challenging. Suddenly everyone has to be looking for additional cash outflow on the penalty. Correct. It's Absolutely. something we should be keeping in the mind while advising, because we come to the pre-deposit only last day for filing, तब बोलेंगे कि इतना deposit करो. This is something we need to be mindful of. Very true. Very true. Because tribunal is not constituted. It will be constituted, but God knows when it will be constituted. Correct. By that time, this notification will come. Yeah, but so for tribunal, at the time of tribunal, this comes, and Yes. suddenly 20% pre-deposit of penalty would come because I have not paid at the first appeal. Correct. So that to that extent, it becomes a retrospective amendment. Is my point. Absolutely. Yep. But then we'll litigate for this. That you can take only 10%. Yes, we have not paid 10% earlier because that provision was not there. So let's see. Yeah. Because that will be very difficult. They are issuing every day thousands of orders are being passed without application of mine, जिसमें करोड़ों रुपए की penalties हैं. And they impose penalties under section 122(1)
clause 1, subclause 3, subclause 7, subclause 14, subclause 13. Every clause is invoked and a penalty is there. Then they say 122 1A. Then they say 122 2B or 2A. All those sections are there. And because I have just read one order like last week only. So an order of, I think 20 crores have become an order of 200 crores. So many sections are invoked, and in each section equivalent penalty is there. So what you are going to challenge and how you are going to pay the pre-deposit, that will become a biggest question. Because आज की date में after that circular, I think 171 or something, they are like issuing penalty orders like anything, and we were also accepting those penalty orders because pre-deposit तो था नहीं. Now the situation has changed. आशु भाई आपका क्या कहना है? आप आई एम श्योर यू माइट हैव आल्सो गॉन थ्रू सच ऑर्डर जहां पे 122 के मल्टीपल क्लॉजेस में लगा रखा है, 122 1A में लगा रखा है, 128 2 में लगा रखा है. Then what will happen in that situation? Whether he is going to pay, for example, 100 crores is under one section, it is repeated for 3 sections, it becomes 300 crores. So he'll have to pay 30 crores as a pre-deposit. They will ask in totality. Correct. Yeah. Because what is a practical, what is a difficult today, all the things will be online. They will not allow you to proceed further. Obviously, either you have to go to the High Court for the relief. Otherwise, what will happen? Everything will be predetermined by the system. There will be order of the penalty. That will total penalty will be there. On that basis, you will be able to move further only when you deposit the 10% of the total penalty. That I understand. Okay. Okay, so I think few more question is there. Can officer has an option to reject DPT 03 filed online? DPT, what is this DPT? I have no idea, sir, for this. 03. Can Mr. Pathan, Ali Pathan. can you just elaborate what is DPT 03? Because I am not a person of compliance, so मुझे तो पता ही नहीं है फॉर्म क्या नाम ही नहीं सुना. I'll try to unmute him. Ali Pathanji, can you unmute and speak up? I have unmuted you. अच्छा, DRC 03. Can officer has an option to reject? I think yes, he has an option to reject. Ashu bhai? Because that DRC 04. I think DRC he has to issue some DRC form. He has to issue for acceptance or rejection for further. DRC 04, then DRC 05. Yes. Can GSTR 1 be amended today? I don't think so. So 1 cannot be amended. That is, if it within the time limit, it can be done. If I'm not wrong, मेरे ख्याल से जो I think it is 37 subsection 3 proviso, which talks about the revision of this DRC 0 that GSTR 1, but उसमें time limit है 30th November. I think so. 30th November or maybe September. I don't remember, but within that limit, yes. Otherwise, High Court. Yeah. 10% free deposit be applicable for section 74 cases where I paid tax and interest, but department issued notice for penalty. Yes. Yes. See, this is nothing new. Even in service tax excise also, 35F was talking like this only. If there is a tax dispute and a penalty dispute, then 7.5% of the tax amount. If it is only penalty, then 7.5% of the penalty. So they have just brought in the same provision. मेरे ख्याल से उनका lacuna रह गया था, anomaly रह गया था because they were not asking for pre-deposit. Yeah. 25% already paid for penalty under section 129 shall we need to pay 10% in case of second appeal in tribunal? I think yes. Because that will be appropriated by the to pay 10% of that. Because modified जो order आता है, modified जो amount रहेगा, उस पे 10% आएगा. If I'm not wrong, Ashubhai and Venubhai is there, they can add. Sir, the 129 25% is a different thing. So the amendment has happened only for the regular demands.
So if we see the provision for the pre-deposit amendment, it has amended only the section 107, the first, the existing proviso, which is equal to the regular appeal. So for penalty arising from the pre-deposit, 25% is there. That is not altered. That is the status quo. Correct. So that will continue. They will have to pay. Yeah, but actually they have proposed to remove this. Yes, but 129 penalty will be removed basically. ये वो हट The जाएगा deposit. जो पे किया See- है वो वैसे रहेगा. We can't हाँ. take thing. So that means that proviso is going to be substituted, right? हाँ. हाँ. So even till the next, it is 10% first appeal, 10% tribunal, वहीं पे रहेगा. I don't think we can take back that 5% or 15% extra. Yes. Yes. Proviso will be substituted basically. Correct. 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 So they again forgot to add this. So now again another amendment will come. 129 को add करने के लिए they will add further proviso to this. No, I don't think that will happen. The penalty will be covered into this category only. शेयर के मुंह में खून लग गया है सर. 25% मिलता था अभी 10%. वो बात अलग है. पैसे कम पड़ते हैं तो आएंगे, फिर कहाँ से आएंगे? In case of amnesty cases against which appeal were filed and 10% was paid, and now opting for amnesty, can that 10% be adjusted? I don't. Against which appeal were filed and 10% paid and the opting for amnesty. Yes, if you are basically if you have pre-deposited 10%, you can always apply for the refund for that purpose. नहीं, Ashu No, bhai, no, no, he is amnesty- talking about the Tax liability. tax, the liability. So under the amnesty, he also has an obligation to pay. So it will get adjusted. Yes. Refund नहीं मिलेगा बस. Balance 90 rupees he will have to pay. हाँ. But अगर उसने 110 rupees गलती से भर दिया and adjudication is of 100. So then the balance has to So be taken that way. हाँ. So refund will not be given. वो तो सरकार पहले ही लिख देती है ना. इस अमेंडमेंट भी तो लिखा है कि हम जो आपको एग्जाम्पशन अभी शेड्यूल 3 में दे रहे हैं, अगर उसमें से किसी ने पेमेंट रिकवरी कर लिया है, then we will not pay it back. ये that provision is already there. That they already Yes. proposed it. 129. Any other query? Shall we pay 10% more in second appeal addition to 25% we already paid? I think yes, it is. No. already- No, it has not to be. Because the total, if you are going for existing provision, 20% is the total amount to be paid. No, but वो adjust करके order निकालेगा ना. That's what Avinash ji was saying. नहीं. Let us see what 112 was saying. Because अगर 107 अमेंड हुआ था तो 112 भी हुआ होगा. ये 110 भी हुआ. नहीं, 112 में इंसर्शन है. 112 में पहले नहीं था. 129 के लिए कोई प्रोविजन नहीं था. Pre-deposit was there, no? For 129 there was no pre-deposit condition. For 112 additional deposit. अच्छा, okay. Happened in this budget. 107 में substitution है और 112 में addition है provision का. But what I feel is, मेरे हिसाब से, because the order will say, अच्छा, this is the amount only of penalty. E-way bill cap, basically 25% E-way bill cap. Yes. It has been paid. So that same thing is holding good for the tribunal. Yes, correct. Then it is not required. Yes. Correct. Because it is a penalty, it is not going to be changed. If the Correct. amount is changed and it is adjusted, then additional 10%. Okay. True. Because many times orders ऐसे आते हैं ना कि like whatever you have paid up till now, they will appropriate that amount and the balance will be demanded. So for that balance, you will have to pay 10%. But in this case, it is a penalty amount. The penalty will either it will remain same or it will be like deleted. So if it is same, then in that case, nothing to be paid. Yeah, but as you rightly pointed, Avinash bhai, if the first appellate authority is making an order saying out of 100 rupees penalty, you have already paid 25, balance 75 to be paid now,
then 10% to be When paid. I'm going for an appeal, then the 10% to be paid, I think that would be holding good. Ashubai, your view. Absolutely, yes. Okay, I think last question is for applying amnesty scheme. One has to withdraw all his appeal first. A comment or a question? Not sure. No, this is a comment, I think. But Yeah. this is this condition is very rigid, I would say. Yeah. First you withdraw, then file, then we will reject, When you go then for go and appeal. file again. What kind of provision is this? Okay, I think we are done with the questions today. So it's sharp 8:30. Yeah. So I think on behalf of Ashwa Legal, I certainly thank all the participants who joined today, as well as speakers. I think, of course, Avinash Bhai, Ashuji, and Venu sir, as well as Kapil Goyal ji, who delivered on direct access. So we thank you all for joining the session, and we continue to have more such sessions. So request all of you to join and continue to join these sessions. Thank you and good night. Thank you. Okay.